ना बीच में प्लीज, ना बीच में प्लीज। Everyone, ABS developers T20 qualifiers and this is Karachi Blues taking on Larkana and this is Karachi Blues taking on Larkana and इससे पहले हार चुके हैं लेकिन इस हवाले से आज फिर देखते हैं कि दोनों हार चुके हैं किस तरह का मैच होता है। दिस इज मीरब ज़िशान और मेरे साथ मौजूद है अली यूनुस द कमेंटेटर और मेरे साथ मौजूद है अली यूनुस द कमेंटेटर द नंबर एंड यू नो द अली सो अली होप यू आर डूइंग अच्छी टीमों के दरमियान मैच है, लुकिंग फॉरवर्ड गुड अच्छी टीमों के दरमियान। और अली के साथ जो है वो जाज़िब मौजूद है, अली के साथ जो है वो जाज़िब मौजूद है और इनसे बात करते हैं। जाज़िब आप कैसा फील कर रहे हैं पीएसएल के अंदर? जाज़िब आप सामने आ रहे हैं और आज के अंदर आज का मैच भी बहुत सामने आ रहे हैं और बिगर आई बॉल मैच भी बहुत नजर आ रहा है। हाउ इज योर बिगर आई बॉल स्क्रीन पर नजर आ रहा है? हाउ इज योर फीलिंग वंस अगेन? बहुत अच्छी फीलिंग है पहले तो पीएसएल में सिलेक्ट होने की बहुत अच्छी फीलिंग है पहले तो पीएसएल में सिलेक्ट होने की एनर्जी से मैं फील कर रहा हूं इस टूर्नामेंट में भी अच्छी एनर्जी से इसी तरह देख रहा हूं कि ये मेरे मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह देख रहा हूं कि ये मेरे मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच खिलाती है तो फिर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। जानना चाहेंगे कि ये पिचेस थोड़ा डिफिकल्ट है, आपसे बॉलर्स का सपोर्ट कर रही है, पिचेस थोड़ा डिफिकल्ट किए हैं क्योंकि पहले मैच में उस तरह से परफॉर्मेंस कोई एडजस्टमेंट किए हैं पहले मैच में उस तरह से ऑब्वियसली एडजस्टमेंट की है, कोचेस के साथ भी बात की है कि जिसमें जो हमारी कोचिंग के साथ भी बात की है कि इसमें जो हमारे
क्रिकेटिंग शॉट है थोड़ा उससे के क्रिकेटिंग शॉट मेरा गेम है थोड़ा उससे सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर मैं लंबा 4 ओवर तो मैंने सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं है जैसी विकेट चल रही हैं तो उसके हिसाब से सामने ही है जैसी विकेट चल रही है तो उसके हिसाब से एडजस्ट किया है थोड़ा इंशाल्लाह। Thank you so much and all the best, Jazib. It was lovely having you so much and all the best. Let's move towards the pitch report. With that, let's move towards the pitch report. It's a bit hazy here at the Gaddafi Stadium, Lahore. It's a bit hazy here at the Gaddafi Stadium, Lahore. T20 Qualifiers, ABS National T20 Qualifiers, and the pitch we are using for today's both games, and the pitch we are using for today's both games pitch number 7. It looks quite pitch number 7 to what we had for the first 2 days. Similar to what we had for the first 2 days. Evenly covered with grass, well rolled in. It's evenly covered with grass, close well rolled in. The cracks are well binded. Close to it. That means the cracks are well binded. So that means and there might be a bit of moisture in this and there might be a bit of moisture in this sunlight. The sun isn't out. There is not very strong sunlight. So maybe whatever moisture it has today may carry on. So maybe whatever moisture it has normally does. But all in all, good cricket conditions. There will be something for the bowlers and the batters. Will be something for the bowlers shots of the batters. They'll have plenty of opportunities to score runs. They'll have plenty of opportunities to score runs. Perfect. This was Salman Butt on the pitch. Ali, जब एक टीम पहले जीत चुकी होती है तो कॉन्फिडेंस भी हायर होता है। तो आज हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस भी हायर होता है। तो आज हम कह सकते हैं कि फेवरेट ना भी जीतो तो शायद अगर आप ऑन पेपर दोनों टीम्स को भी देखें, ना भी जीतो तो शायद अगर आप ऑन पेपर दोनों टीम्स को भी देखें तो कराची में जो यंगस्टर है वो लाड़काना के प्लेयर्स से थोड़ा ज्यादा है। लाड़काना की थोड़ी सी हैरानी हुई थी कराची की, बट देन अगेन मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई थी कराची की। अगर तो वो वैसी ही फील्डिंग करेंगे तो फिर तो वो किसी से नहीं हार सकते। वैसी ही फील्डिंग करेंगे तो फिर तो यहाँ पे बड़ी स्टेज के ऊपर यू हैव टू ब्रिंग योर ए गेम। यहाँ पे बड़ी स्टेज के ऊपर यू हैव टू ब्रिंग योर ए गेम। थोड़ा मुझे लाड़काना थोड़ा मुझे स्टेटमेंट से कि यंग साइड है, जब आप इधर आ गए हैं से कि यंग साइड है तो सब बराबर हैं। इधर आ गए हैं स्टेज पे आ गए हैं, अपनी ए गेम लेके बराबर हैं। सबको शाहनवाज दानी है, ए गेम लेके आ रही है, खुद हैं उस टीम के। शाहनवाज दानी है, सीखना चाहिए डेरा मुराद जमाली से जिस तरीके से क्रिकेट वो सीखना चाहिए। डेरा मुराद जमाली से जिस देना कि हम यंग हैं, हमें थोड़ी मार्जिन दिया जाए। ये स्टेटमेंट इज नॉट ऑन, यंग हैं हमें थोड़ी मार्जिन दिया जाए, बराबर है। दैट इज नॉट ऑन। डेरा मुराद जमाली से सीखिए बराबर है और एक अच्छा मैच मुराद जमाली से सीखिए और एक अच्छा मैच खेलिए। बिल्कुल ऐसे ही आपने दहानी का जिक्र किया। दहानी पर ऑल अबाउट अ वन गुड स्पेल एंड अ वन गुड पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट अ वन गुड स्पेल एंड अ वन गुड पार्टनरशिप। दहानी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसका रुख बदल जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे एचपीएल पीएसएल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिदम में आगे एचपीएल पीएसएल टूर्नामेंट से वो लेके जाएंगे। पहले मैच में इसी थोड़ा टूर्नामेंट से वो लेके जाएंगे। उनकी बॉलिंग की लेंथ सही नहीं थी, डिसअपॉइंटिंग चले हम फिर भी मार्जिन देते हैं कि सही नहीं रेड बॉल क्रिकेट चले हम फिर भी मार्जिन देते हैं कि वो लेंथ उस तरीके से परख नहीं पाए, पिच डिफरेंट वो लेंथ उस तरीके से परख नहीं पाए, लेके सिर्फ एक ही मैच बॉल डिफरेंट। इसके बाद अब ये मार्जिन लेके सिर्फ एक ही मैच का है परफॉर्मेंस के बाद अब यहां से ऑनवर्ड जो भी उनकी परफॉर्मेंस होगी वो क्रिकेटर हैं, बाकी यंग लड़के क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, आप कैसा बिहेव करते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं कि आपने बाकियों को भी सिखाना है, अपने साथ यंगस्टर्स को सिखाना है। तो आपने बाकियों को भी सिखाना है, अपने साथ यंगस्टर्स को सिखाना है। रहेंगे अगर आप भी थोड़ा नॉन सीरियस रहेंगे, हेल्प रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। अली खुद अभी कुछ देर पहले टॉस करवा रहे थे तो चलिए टॉस। अली खुद अभी कुछ देर पहले टॉस करवा रहे थे तो चलिए टॉस देखते हैं। All in order for the all-important toss of match number 5. All in order for the all-important toss of match number 5 qualifiers of ABS Developers National T20 Qualifiers. The two captains are here alongside me. Ghazi Gauri for Karachi are here alongside me. Ghazi Gauri for Mohammad Aslam, the match referee. For Larkana and Mohammad Aslam, the match referee is gonna give it a spin. Readiness. Zaid Mahmood is gonna give it a spin. Tails is the call. Tails is the call. Tails it is. Ghazi Gauri has won the toss. Tails it is. क्या करेंगे? Ghazi Gauri has won the toss. अभी तक तो सारे कैप्टन्स ने बॉलिंग की लेकिन चेज एक ही बार सारे कैप्टन्स ने बॉलिंग की लेकिन चेज एक ही बार सक्सेसफुली हुआ है। लेकिन ये है कि वही बात है, लेकिन ये है कि पिच में ये है कि आज थोड़ा मौसम इस तरीके का है कि बाद में थोड़ा मौसम इस तरीके का है कि पहली बारी में उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो बस पहली बारी में उसका फायदा उठाना चाहते हैं। ये डिफरेंट पिच है जिसमें पहले दिन आप मैच खेले थे, क्या इसमें कुछ अलग लग रहा है? या पहले दिन आप मैच खेले थे, क्या इसमें कुछ अलग लग रहा है या सेम ही लग रहा है आपको? जरा खास अलग नहीं है, उसका थोड़ा फायदा उठाना चाहते हैं पहली बार से। आज हम आपकी टीम को स्विच ऑन देखेंगे, उस दिन शायद थोड़ा कहीं ना कहीं स्विच ऑफ स्विच ऑन देखेंगे, उस दिन शायद थोड़ा कहीं ना कहीं स्विच ऑफ लगे। टीम में चेंजेस बिल्कुल एक चेंज है अनफॉर्चुनेटली, एक चेंज है अनफॉर्चुनेटली उसकी जगह मास को रम डेब्यू का मसला है। ऑल द बेस्ट गाजी गौरी, मास को रम डेब्यू का महमूद, ऑल द बेस्ट गाजी गौरी। 99 विकेट्स, एक विकेट है आपकी, अच्छे रिकॉर्ड 99 विकेट्स। टीम को कैसे देख रहे हैं पिछली हार के बाद क्या बात हुई है? टीम को कैसे देख रहे हैं पिछली हार के बाद क्या बात हुई है? जी काफी कुछ गलतियां
गलतियां की थी पिछले मैच में वो ना हो, की थी कोशिश करेंगे कि वो ना हो, उसको इम्प्रूव करें, और कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आपने सही कहा कि इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि यंग साइड अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं देखते तो फिर कप्तान के लिए भी मसला, अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं देखते तो फिर कप्तान के लिए भी मसला होता है। यंग लड़के जी बिल्कुल ज्यादा उन पे कह सकते हैं, यंग लड़के फील्ड के दौरान तो आहिस्ता आहिस्ता फील्ड के दौरान इम्प्रूवमेंट आ रही है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इम्प्रूवमेंट आ रही है, और इंशाल्लाह डिफरेंट सरफेस से पहले बैटिंग करते हुए कितने रन करना चाहेंगे? डिफरेंट सरफेस से पहले बैटिंग करते हुए कितने रन करना चाहेंगे? कोशिश करेंगे 170 तक। और टीम न्यूज़ क्या है, सेम टीम है या कुछ चेंजेस किए? दो चेंजेस है। न्यूज़ क्या है, सेम टीम है या कुछ चेंजेस किए? दो चेंजेस है। अली असगर खेल रहे हैं, और दूसरा की जगह अली असगर खेल रहे हैं, जो बॉल लग गई थी, और दूसरा साबित को जो बॉल लग गई थी। All the best, Zahid Mahmood. थैंक यू। जाहिद खेल रहे हैं। All the best. The news from the toss is that yet another captain was won the toss and decided that yet another captain was won the toss and decided to bowl first. That was the toss, लेकिन अली एक कंफ्यूजन है, जो भी टीम टॉस जीत रही है बॉलिंग का फैसला कर रही है, जो भी टीम टॉस जीत रही है बॉलिंग का फैसला कर रही है, इवन इफ द कंडीशंस हेल्प्स यू इन द बॉलिंग, तो फिर भी डोंट यू थिंक कि थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगता है कि जितने भी कैप्टन अभी तक टॉस जीते हैं, मुझे भी अजीब लगता है कि जितने भी कैप्टन अभी तक टॉस जीते हैं उन्होंने पहले बॉलिंग का ही अंदर जो वो जो हमें नहीं पता लग रही है, जो उनको पता लग रही है, जो वो हमें नहीं पता लग रही है, ज्यादा चेंज नहीं लग रही है, क्योंकि कंडीशंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई। ये नहीं कह सकता बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट उसने डाला है, ये नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट उसने डाला है, बट इसके भी भी याद आपकी अपनी स्ट्रेंथ ऐसी है कि आप एज अ टीम आपको चेस भी याद आपकी अपनी स्ट्रेंथ ऐसी है, मुझे तो यही वजह लगती है कि बॉल सेम है दोनों के, पिच सेम, मुझे तो यही वजह लगती है क्योंकि बॉल के मैच है शाम को, चले हम कह सकते हैं थोड़ा गेंद दिन के मैच है शाम को, चले वो सेकंड मैच में बिल्कुल ही इवन हो जाती है, ज्यादा घूमता है वो, पहले मैच में फिर भी समझ आती है, सेकंड मैच में तो बिल्कुल पहले मैच में फिर भी समझ आती है, बट सेकंड मैच में तो बिल्कुल समझ नहीं आती है। आई थिंक लुक टू डिफेंड इट ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, रादर देन लुक टू डिफेंड इट ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, रादर देन अनदर थिंग टू डिस्कस इज दैट अनदर got injured again once again, पहली शान ज़मीर got injured again, एक बार फिर उन्हें इंजरी से रिकवर है, तो that's very sad thing, एक बार फिर it's unfortunate, देखिए इतना talented young fast bowler है, देखिए इतना talented young fast bowler है, और ये बड़ी फिजिक उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहाँ भी वो उसकी बड़ी फिजिक जोर लगाने जाता है तो ऐसा है कि जहाँ भी वो कोई मसल थोड़ा जोर लगाने जाता है, तो मैच में हमने देखा उसने 3 ओवर कराए थे, पिछले मैच में भी हमने देखा अच्छे रहे थे, 3 ओवर कराए, लगा था कि सेकंड ओवर बहुत ही अच्छे रहे थे, लेकिन उसको किसी लगा था कि सेकंड ओवर शुरू हो गया था, कहीं ना कहीं हम किसी टेल के कहीं ना कहीं थोड़ा इशू उसको आ रहा है, जो कि हम बट गुड फॉर कराची के उन्होंने पहला मैच जीता हुआ है, गुड फॉर कराची के उन्होंने पहला मैच जीता हुआ है, इतनी डेस्परेट सिचुएशन वो देना ड्रॉप ये रेस्ट करा सकते थे शायद, क्या वो देना ड्रॉप ये रेस्ट पर्पस से लारकाना इज क्या होगा रिलेटिवली वो कहेंगे कि वीकर अपोनेंट है, रिलेटिवली यहां पे वो चांस ले सकते हैं कि वीकर अपोनेंट रादर देन आगे जाने बड़े मैच जहां पे आएंगे वहां पे देन आगे जाने बड़े मैच जहां पे आएंगे वहां पे उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी रादर देन लेट्स मूव टू द कॉम बॉक्स। बिल्कुल सही है, विद दैट लेट्स मूव टू द कॉम बॉक्स। एक मरतबा फिर तमामी नाज़रीन का खैर मकदम करते हैं, एक मरतबा फिर तमामी नाज़रीन का लाहौर से करते हैं, मैच खेला जा रहा है स्टेडियम लाहौर से, ABS डेवलपर मैच खेला जा रहा है T20 Qualifier डेवलपर, नेशनल बड़ी टीम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है, कराची ब्लू दो बड़ी टीम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है, कराची ब्लू और एक मरतबा फिर सामने है कराची ने टॉस जीता और एक मरतबा फिर बॉलिंग करने का फैसला किया है, और इससे पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है, और पिछला मैच था इससे पहले भी कराची का, उसमें भी उन्होंने पिछला मैच टॉस जीत के बॉलिंग किया था, उसमें भी उन्होंने कामयाबी के साथ रन को चेस किया था, कामयाबी के साथ रन को चेस किया टूर्नामेंट हमने देखा है, जब कराची वाहिद टीम है टूर्नामेंट ये है, दो कराची वाहिद टीम है ये है लारकाना रीजन एंड क्लाशी ब्लूज, प्लेइंग 11 लारकाना रीजन एंड क्लाशी ब्लूज। कराची ब्लू ने एक तब्दीली की है, मास खुरम अमीन को डाला है स्क्वाड के अंदर, जबकि लारकाना ने दो को डाला है स्क्वाड के अंदर, जबकि लारकाना ने दो जाहिद हुसैन को डाला है और एक अली असगर को जाहिद हुसैन को डाला है, जाहिद महमूद क़यादत कर रहे हैं लारकाना रीजन की, और जाहिद महमूद क़यादत कर रहे हैं लारकाना रीजन की, और गाजी गोरी करेंगे विकेट कीपर बैट्समैन की, वो क़यादत करेंगे एक मरतबा फिर कराची ब्लूज की, तो एक मरतबा फिर ये आज के हमारे अंपायर फारूक अली खान, आज के हमारे है अहमद शहाब, फारूक अली खान मजे हुए, हमरा है अहमद शहाब, तजर्बाकार, दोनों बड़े मजे हुए, बड़ी सलाहियत है, तजर्बाकार, बड़ी सलाहियत है इनकी। कराची की टीम इस वक्त कराची की टीम इस वक्त एक तश्कील दे रही होंगी, प्लान मैच जीत चुकी है, अच्छा आगाज है उनका इस टूर्नामेंट में, जीत चुकी है, कोई भी अच्छा आगाज है उनका इस टूर्नामेंट से आगाज करे, कोई भी टीम उसके लिए बड़ा पॉजिटिव से आगाज होता है, नौजवान के लिए बड़ा पॉजिटिव है इनके अंदर होता है, नौजवान टीम पोटेंशियल दिखाई दिया है हमें अंदर, कराची ब्लूज के पोटेंशियल दिखाई दिया है हमें कराची ब्लूज के अंदर,
और माजी के अंदर हमने देखा है कि कराची की बड़ी एक्सपीरियंस माजी के अंदर हमने देखा है कि कराची की बड़ी एक्सपीरियंस की ये हमने देखा है कि हमने देखी है कि ये हमने देखा है दिया गया है मौका और ये यंग सलामी बल्लेबाज दिया गया है मौका और लाड़काना के सलामी बल्लेबाज लाड़काना के क्रीज की तरफ रवां दवा है लाड़काना के क्रीज की तरफ रवां दवा है लाड़काना के ओपनिंग पेयर उसके ऊपर काफी प्रेशर होगा कि पहला मैच लूज कर दिया था लाड़काना ने पहला मैच आज लूज कर दिया था लाड़काना सीखा है और एक मिराज के साथ गलतियों से सबक सीखा है और एक नई जस्तजू के साथ मैदान में उतरे हैं खान आग मरतबा फिर टॉस जीता है कराची ब्लूज ने आग मरतबा फिर बॉलिंग करने का फैसला कराची ब्लूज ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और आप जैसे जिक्र कर रहे थे अभी कि ये जो विकेट है और आप जैसे जिक्र कर रहे थे अभी ये जो फैसला है और अबाउट ये जो फैसला है टॉस अबाउट टॉस विनिंग कैप्टन विनिंग टॉस ये बहुत सी चीजों को पेश नजर रख के किया जाता है बहुत सी जो बलियत होती है वो पिच कंडीशंस होती हैं अपनी पहली जो बलियत होती है वो पिच कंडीशंस होती है साइड द पॉइंट होती है बाज़ औक़ात ये जो सेट बलीज साइड द पॉइंट इस बाज़ लेवल पर सेट बलीज कमी होती है इसमें एक लेवल पहली गेंद कमी जाएगी तो इस तरह देखना ये होगा पहली गेंद फेंकी जाएगी गेंद और देखना ये होगा करती है कैसा बाउंस लेती है गेंद कैसी बाउंस है कैसा बाउंस सीधी रही उनका बाउंस छेड़खानी की जाए आपको पूरा ऊपर आना होता है के साथ छेड़खानी की जाए आपको पूरा ऊपर आना होता है या कट करनी है इसमें ड्राइव करनी है या कट करनी है इसमें एक तमाद और शनाख्त होती है गेंद के नुक्ता निगाह से वो बड़ी अहम होती है मुझे एक शनाख्त होती है गेंद के नुक्ता निगाह से वो बड़ी अहम होती है जी बिल्कुल और ड्यू को जो एक मद्देनजर रखा था टॉस के दौरान हमने देखा को जो एक मद्देनजर रखा था टॉस के दौरान सर पर नहीं सवार करना चाहिए और बेहतर प्लान के साथ सर पर नहीं सवार करना चाहिए और जीता है एक एडवांटेज मिला है कराची को टॉस जीता है एक एडवांटेज फायदा तो होगा कराची को दूसरी जानिब उसका फायदा तो होगा कंडीशन से लड़ने की जरूरत है जानिब कंडीशन से लड़ने की जरूरत है अच्छी गेंद थी बल्ले को हैंग किया जायद ने अच्छी गेंद थी बल्ले को हैंग किया जायद ने राइट फ्रॉम द वर्ड को टारगेट पर हैं और जब नया गेंद होता है वर्ड को टारगेट पर हैं जब नया गेंद होता है जल्दी से अपना खाता खोल ले लेकिन ऐसी गेंदें की जाए जल्दी से अपना खाता खोल ले लेकिन ऐसी गेंदें की जाए थोड़ी सी स्विंग भी हासिल कर लो अच्छी हाइट से ब्यूटीफुल हाइट से स्विंग भी हासिल कर रही हूं अच्छी हाइट से ब्यूटीफुल हाइट कहती है उस पर भी आ रही हूं जाहिद हो या मल्हार उनके लिए इब्तिदा में मुश्किलात होती है जाहिद हो या मल्हार उनके लिए इब्तिदा में मुश्किलात होती है कराची का एक दबदबा है नाम है उनकी एक दबदबा है लाड़काना इज अ टीम व्हिच इज कमिंग अप उनको लाड़काना इज अ टीम व्हिच इज कमिंग क्वालीफायर में मौका मिला है इवेंट में क्वालीफायर में मौका मिला है अच्छा अंदाज है अच्छे तरीके से प्लेस किया है पेस का अच्छा अंदाज है अच्छे तरीके से प्लेस किया है पेस का गेंद का अच्छा इस्तेमाल किया इस तरह खाता खोल लिया इस तरह लाड़काना खोल लिया ये आज के दिन का पहला रन है ये दिन का पहला रन है बहरहाल इंटरेस्टिंग क्रिकेट हो रही है ओवरऑल बहरहाल इस क्वालीफायर क्रिकेट हो रही है ओवरऑल टीमें जो कि कदरे इतनी नामी ग्रामी नहीं उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस कदरे इतनी नामी ग्रामी नहीं उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस पहले भी ऐसा देखा कि कल भी हमने ऐसा देखा और मिनोज कह सकते हैं कि जिनकी तारीख को बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है ये जिनकी तारीख को बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है ये अच्छी कारकर्दगी दिखानी है लाड़काना उनमें से एक है कारकर्दगी दिखानी है लाड़काना उनमें से एक है मल्हार और जाहिद यहाँ पर प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स हैं मल्हार और जाहिद दे स्लिप एट प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स स्लिप एट प्लेस सीधे बल्ले के साथ ड्राइव सीधे बल्ले के साथ ड्राइव मल्हार ने पिछले मैच में 50 रन की पारी खेली थी और 50 रन की पारी खेली थी और ज़ाहिर किया था इन्होंने पावर हिटिंग्स का स्लॉग हिटिंग किया था इन्होंने पावर हिटिंग मल्हार ने स्लॉग हिटिंग बहुत ही क्लीन हिटिंग की थी मल्हार ने जारहाना अंदाज है इनका बल्लेबाजी करने का जारहाना अंदाज है इनका बल्लेबाजी करने का पहली ही बॉल खेलेगा आते ही और इंटेंट अपनी शो कर बॉल खेली स्ट्रोक में इंटेंट अपनी शो कर दी
स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर है मल्हार। काफी क्लीन हिटिंग हमें देखने को मिली थी मल्हार के बल्ले से। क्लीन हिटिंग हमें देखने को मिली थी मल्हार के बल्ले से। ड्राइव करने की कोशिश और उसमें नाकामी। ड्राइव करने की कोशिश और उसमें नाकामी। अटैकिंग गेंद थी लेकिन बड़ा जल्द फैसला किया वाइड के सिलसिले में। इसको हम दोबारा देखना चाहेंगे किया वाइड के सिलसिले में। दोबारा देखना चाहेंगे। कामयाब हुए के बैट्समैन ने पूरी कोशिश की हुए के बैट्समैन ने पूरी कोशिश करने के साथ गेंद स्विंग होती हुई छेड़खानी करने की सही फैसला होती हुई बाहर जाती हुई बरवक्त सही फैसला अंपायर का बरवक्त। ये अब तक काफी तसल्ली बख्श लाइन और लेंथ पर बॉल काफी तसल्ली बख्श मिडल ऑफ से लाइन और लेंथ पर बॉल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मिडल ऑफ से स्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा वो पिच नहीं हुए और टॉप एज लग गया इस मर्तबा जाहिद का और टॉप एज लग गया इस मर्तबा जाहिद का। पहली विकेट पहले ही ओवर में पहली विकेट पहले ही ओवर में। ज़ाहिर है कि बिहेव जिस तरीके से लग रहा था कि वो एक बड़ी हिट खेलने के लिए जा रही है। इब्तिदा है लग रहा था कि वो एक बड़ी हिट खेलने के लिए जा रही है। इब्तिदा है डेफिनेट ना हो जाए इब्तिदा में जब तक आपको आप डेफिनेट ना हो जाए आपको एरी फेरी शॉट करना हो और जाहिद की लाइन में भी नहीं एरी फेरी शॉट थी और जाहिद स्विंग भी लिया ऑफ द विकेट बाहर निकली और स्विंग भी लिया आउटसाइड एज बाहर निकली और इंतजाम में बुलंद हुई आउटसाइड एज स्ट्रेट फॉरवर्ड इंतजाम में बुलंद हुई और इस तरह पहली कामयाबी कराची पर लिया गया। पहली कामयाबी कराची का ये पहला नुकसान है। लाड़काना का ये पहला नुकसान है। अगर हम देखें जाहिद आउट होकर वापस जा चुके हैं। अगर हम देख सकें तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर देख सकें तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस सीधा खेलना होता है इब्तिदा में। ये बिल्कुल लीगल सीधा खेलना होता है इब्तिदा में। ये कदम सही जगह पर पड़ा थी पॉपिंग क्रीज से पीछे सही जगह पर पड़ा और पॉपिंग क्रीज से पीछे ये तभी तौर पर जाहिद हुसैन तभी तौर पर हैं। जाहिद लाड़काना 3 आउट हो चुके हैं नुकसान पर। लाड़काना 3-1 विकेट के नुकसान पर। ब्राइट स्टांस है नए बैटर मैदान में आए हैं। ब्राइट स्टांस है नए बैटर मैदान में आए हैं पर ये कॉन्फिडेंट के साथ ओपनर की हैसियत से एक स्ट्रोक था एक ओपनर की हैसियत से और इसको स्ट्रोक ऑफ साइड लाइन में पहला ओवर खत्म हुआ लाड़काना का ऑफ साइड लाड़काना पहला ओवर खत्म हुआ लाड़काना का। लाड़काना 3-1 विकेट के नुकसान पर। ये एक ज़रा मुख्तलिफ किस्म का डिस्प्ले आपके लिए जिसमें आप बिल्कुल ज़मीन के साथ आपके लिए जिसमें कैमरा है बिल्कुल ज़मीन के साथ ये माज खुरम कैमरा है बॉलिंग करने के मनाज़र देख रहे हैं। ये माज खुरम आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इस टूर्नामेंट में पहला मैच खेल रहे हैं। ये इस टूर्नामेंट में पहला मैच खेल रहे हैं। मौका है जो इस वक्त सूरत हाल है उसको कैच मौका है जो इस वक्त सूरत हाल है उसको कैच करने की कोशिश करें और बैटर मल्हार सामना करेंगे करने की कोशिश करें। बीट हो गए मल्हार सामना करेंगे बेहतरीन गेंद बीट हो गए। आगाज तो अच्छा है पहली ही गेंद बेहतरीन पर अगर हम देखें आगाज तो अच्छा है बैटर यहां पर अगर बड़े अजीबोगरीब अंदाज से खेले गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई ना उनके पल्ले पर अंदाज से खेले गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई ना उनके पल्ले पड़ी और विकेट कीपर के ग्लव्स में गई स्विंग होती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में गई। इस तरीके से बैटर आउट थिक आउटसाइड एज ऊपर फजा में गया और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थिक आउटसाइड एज ऊपर फजा में गया और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच शॉर्ट कवर में। बहुत जल्द सबर का पैमाना लबरेज हो गया था। बहुत जल्द सबर का पैमाना लबरेज हो गया था जाहिद हुसैन का। कदमों का इस्तेमाल स्लिप के ऊपर से गुजर गया बॉल 4 रन के लिए। स्लिप के ऊपर से गुजर गया बॉल 4 रन के लिए। शॉट थी लेकिन फिर भी 4 रन हासिल किए मल्हार ने। एरी फेरी शॉट थी लेकिन फिर भी 4 रन हासिल किए मल्हार ने। 50 बना चुके हैं इस इवेंट में और उनका तमाम जो है 50 बना चुके हैं इस इवेंट में और उनका तमाम जो है और इस बार उन्होंने जो शॉट खेला और बिल्कुल महफूज था आउटराइट लगा जो शॉट खेला। ये T20 क्रिकेट का खासा है कि आउटराइट लगा। ये T20 क्रिकेट का खासा है कि यहां पर बैट के बाहर वाले हिस्से को भी लगे तो चौके मिल जाते हैं। बैट के बाहर वाले हिस्से को भी लगे तो चौके मिल जाते हैं।
थर्ड मैन पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था और यहाँ से निकले। एंटिसिपेट किया नहीं, कुदरती हमारा कि जब गेंद आपके दाएं या बाएं से गुजरती हमारा कि जब कैच की सूरत में तो आप उछलते हैं या बाएं से, लेकिन ना विकेट कीपर ने ये जहमत में तो आप उछलते हो, ना ही लेकिन ना विकेट कीपर ने ये जहमत चक्कर इसको और ना ही हासिल करने की खड़े हुए फील्डर ने चाहे नाकामी कोशिश करते, कोशिश होनी चाहिए, एक चाहे नाकामी कोशिश करते कोशिश होनी चाहिए थी। ये भी अब कहाँ जाएगा 6 रन के लिए, भी अब कहाँ जाएगा, बड़ा गैर मामूली स्ट्रोक था, ये बड़ा इनोवेशन है, स्ट्रोक था, आप हट गए, इनोवेशन है देखिए, और गेंद को गाइड किया बल्कि स्कूप किया, गेंद को गाइड किया बल्कि स्कूप किया, कहना होगा लॉन्ग लेग की जानिब, फाइन लेग की जानिब, वहां से फाइन लेग इसको इतना ऊंचा खेला और इतना ऊपर गया वो, इसको इतना ऊंचा खेला और इतना ऊपर गया वो, पता लगा कि गेंद 6 रन के लिए बाहर जा चुकी है, पता लगा कि गेंद 6 रन के लिए बाहर जा चुकी है। जी हाँ, दोनों मरतबा जो किस्मत है मेरे साथ, दोनों मरतबा हमने देखा कि कहीं खेलने जाते थे, दोनों मरतबा हमने देखा कि कहीं खेलना चाहते थे, एज लगा, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, एज लगा, बॉल मैक्सिमम के लिए चली गई। वैसे बड़ा दिलचस्प है, वैसे बड़ा दिलचस्प है, जो अंदाजा हुआ जिस तरीके से बैटर गेंद की तरफ देख रहे थे कि शायद अंदाजा हुआ जिस तरीके से फाइनल की तरफ गई, लेकिन ये गई थर्ड मैन इनफैक्ट फाइनल की तरफ गई, लेकिन ये गई थर्ड मैन उसके ऊपर से होती हुई, जो बैट के गदा है उसके ऊपर से होती हुई, बैट का जो के ऊपर से टॉप है, के ऊपर वाले हिस्से पर बैट का जो लगती हुई ब्लेड है उसके ऊपर वाले हिस्से, ये गैर मामूली स्ट्रोक था, 6 रन के लिए बाहर, ये गैर मामूली स्ट्रोक था, खुश नसीब रहे बहरहाल, एक चौका एक चक्का इस ओवर में लगा चुके हैं, 2 चौके एक चौका दोनों एजी थे, गैर मामूली थे और दोनों एजी थे, गैर मामूली थे, इसमें कोई शक नहीं कि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन किस्मत में कोई शक नहीं कि अच्छी बॉलिंग मेहरबान नहीं है, किस्मत लंबे कद के हैं, मेहरबान नहीं है, लंबे कद के अंदाज है, सीधा पॉइंट पर, ये बेहतर अंदाज है, सीधा पॉइंट का ताल्लुक है, ये T20 के प्रॉपर क्रिकेटर हार का ताल्लुक है, ये T20 के प्रॉपर क्रिकेटर हैं और इनको ऐसे ही करना चाहिए कि बल्ले को घुमाएं और पावर प्ले में जो 60 रन का गदफ होता है, पावर प्ले में जो 60 रन का गदफ होता है, पेश किया, हासिल करने की कोशिश करें, पेश किया, इरादा बदला सीधा पॉइंट पर, जहाँ तक इरादा बदला अपना, इस मैच का ताल्लुक है, लाड़काना के बैटर काफी कॉन्फिडेंट हैं, लाड़काना के बैटर काफी कॉन्फिडेंट हैं कि जो बॉलर हैं, जो कराची हैं, जो खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं, जो बड़े स्टार्टिंग में से सिलेक्ट होकर ऊपर आते हैं, बड़े स्टार्टिंग में से गुजर कर सिलेक्ट होकर ऊपर आते हैं, खास मौके से गुजर कर, लेकिन कंपेयर टू कराची महदूद आबादी है, कंपेयर टू कराची होंगे लेकिन महदूद आबादी, इनको नुमाइंदगी दी गई है, ये हौसला अफजाई है, इनको नुमाइंदगी दी गई है, हौसला अफजाई है, ऑफसाइड पर गेंद आगे जाती हुई, एक लगने के बाद बाउंड्री लाइन के करीब पे जहां पर फील्डर ने बहुत उम्दा कोशिश लगने के बाद बाउंड्री लाइन के करीब पे जहां पर फील्डर ने बहुत उम्दा कोशिश की, बेहतरीन यकीनी चौका बचा, इस बार फील्डर की सर पर दौड़े एफर्ट और इस बार फील्डर की सर पर दौड़े शानदार अंदाज से गेंद को रोकने में शानदार, ये बड़ा अच्छा मंजर है, कामयाब, ये बड़ा हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अच्छा मंजर है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अच्छे फील्डर हैं। एतमाद वाला स्ट्रोक था, हल्का सा बाहर आया क्रीज से, लॉफ्टेड ड्राइव वाला स्ट्रोक था, हल्का सा बाहर आया क्रीज से, लॉफ्टेड ड्राइव खेला, अंपायर जो हैं और यहाँ पे चेक करना होगा, यकीनी बनाएंगे अंपायर जो हैं वो उसको यकीनी बनाएंगे, चेक करना होगा अंपायर को और सेफ, ये चेक करना होगा अंपायर को। ओवर अभी जारी है, ओवर कैप 2 ओवर हो गए हैं, अभी जारी है, रन कैप 2 ओवर हो गए हैं, विकेट के नुकसान पर 15 रन्स 1 विकेट के नुकसान पर, गेंद अभी बाकी है, इनफैक्ट एक गेंद ओवर के बाद अभी 30 ओवर इनफैक्ट शुरू हुआ है, मंजर बड़ी जल्दी बदल के बाद अभी 30 ओवर इनफैक्ट शुरू हुआ है, को ड्राइव किया, बड़ी अच्छी टाइमिंग है और साइड को ड्राइव किया, बड़ी अच्छी टाइमिंग है और जैसे ही देखा आगे पड़ा है, अकील ने एक प्रॉपर जैसे ही देखा आगे पड़ा है, अकील ने रियली अ ट्रीट टू वॉच, इट वाज रियली अ टाइमिंग टू वॉच, इमैकुलेट टाइमिंग, सच अ स्वीट टाइमिंग स्ट्रोक को खेला, इमैकुलेट टाइमिंग, एक सही साथ में स्ट्रोक को खेला और एक लुक बैन फॉर द बाउंड्री हासिल की अकील ने, अकील लुक बैन फॉर द जॉब। यह बड़ा जबरदस्त टाइम किया, इसको ज्यादा जोर से मारने की बड़ा जबरदस्त टाइम किया, इसको ज्यादा जोर से मारने की कोशिश की, गैप में धकेल दिया बॉल को, गैप फेंका और उस गैप में धकेल दिया बॉल को, कवर पॉइंटर और कवर के फील्डर के दरमियान से 4 रन, कवर पॉइंटर और कवर के फील्डर के दरमियान से 4 रन, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं, क्रिकेट में भी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं, इस बार पुल किया है और टाइम नहीं कर, इस बार पुल किया है और टाइम नहीं कर पाए सही तरीके से, बैटल मुकम्मल किया, तेजी दिखाई, इस तरह रन मुकम्मल किया, ये तीसरा ओवर है जो कि जारी है और इसमें ये तीसरा ओवर है जो कि जारी है और इसमें कील ने अपनी बेहतर क्लास दिखाई है, कील ने चौका लगाया, बेहतर क्लास दिखाई है, ये पावर प्ले चौका लगाया, इसमें आप वैसे ये पावर प्ले है और इसमें आप रन बना सकते हैं, स्क्वायर ऑफ द पिच पर रन बना सकते हैं, ड्राइव राउंड ड्राइव कर सकते हैं, छक्के ड्राइव राउंड ड्राइव कर सकते हैं,
कदगन होती है सिर्फ 2 फील्डर 30 गज के सर्कल के बाहर होते हैं। कदगन होती है सिर्फ 2 फील्डर 30 गज के सर्कल के बाहर होते हैं। आगाज तो अच्छा है, बन गए हैं लाड़काना का, आगाज तो अच्छा है, खो चुके हैं लाड़काना का, अगर 6 विकेट खो चुके हैं। फहद जबरदस्त ड्राइव है, ये चौका होगा, जबरदस्त ड्राइव है, ये चौका होगा। खेले जैसे एक टिपिकल से खेले जैसे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट होती है, जिसका मैं बार-बार जिक्र कर रहा था। प्रॉपर आगे बढ़ी हुई गेंद उसका बार-बार समझा बैटर ने, आगे बढ़ी हुई गेंद उसका एक तोहफा समझा डीप कवर के बाहर मल्हार ने एक पहुंचा दिया डीप कवर के बाहर और इस खूबसूरत को एक ड्राइव के लिए। और इसे कहते हैं पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल करना, और इसे कहते हैं पावर प्ले का बेहतरीन सर के ऊपर से स्ट्रोक खेल दिया मल्हार ने, सभी फील्डर के सर के ऊपर से स्ट्रोक खेल दिया मल्हार ने। जैसा कि मैं जिक्र किया था 4 रन्स के लिए, और जैसा कि मैं जिक्र किया था इनका जारहाना अंदाज है बल्लेबाजी करने का, जारहाना दिखाते हुए अंदाज है बल्लेबाजी करने का, और उसी को दिखाते हुए मल्हार। बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर्स जो हैं, इनको हाथ से खेलने वाले बैटर्स जो हैं, इनको गेंदें करनी होती हैं बॉलर को। शॉर्ट गेंद जोरदार पुल ऑन साइड पर, और शॉर्ट गेंद जोरदार पुल ऑन साइड पर, और ये एक और चौका दरमियान से इसको बाइसेक्ट किया, जो स्क्वायर लेग के दरमियान से इसको बाइसेक्ट किया, जो स्क्वायर लेग के दरमियान से वो 4 रन्स के लिए बाउंड्री लाइन के दरमियान से होती है 4 रन्स के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। जारहानापन है, ये जो एग्रेशन जारहानापन है, ये जो एग्रेशन जिसमें आगे है जारी है, लाड़काना के आगे हैं इस वक्त लाड़काना के बैटर। इसी तरीके से खेल जारी रहा तो एक जो मोनुमेंटल टारगेट, इसी तरीके से खेल जारी रहा तो एक जो मोनुमेंटल टारगेट किया हासिल हो जा सकती है फॉर लाड़काना। ये 2 फील्डर्स प्रोटेक्शन के लिए रखे हुए थे ऑन साइड, 2 फील्डर्स और मिड प्रोटेक्शन के लिए रखे हुए थे ऑन साइड ने पुल किया, और मिड विकेट दोनों के दरमियान से मल्हार ने पुल किया, और बैक टू बैक दूसरा चौका, और एक मतलब फिर फ्लैश किया, और एक मतलब फिर फ्लैश किया। होना नहीं चाहिए यहाँ से सिंगल, टॉप पर होना नहीं चाहिए। इसने ट्रेवल किया, टॉप पर गेंद तेज से इसने ट्रेवल किया, अच्छी फॉर्म में है इनका बल्ला, रन फॉर्म में है इनका बल्ला, साइड रन पर काफी तगड़े हैं, ऑफ साइड रन साइड पर काफी तगड़े हैं। किस्मत बिन पे मेहरबान रही, कुछ किस्मत बिन पे मेहरबान रही, अच्छी ड्राइव करते हैं देखने में, ये ड्राइव करते हैं, प्रॉपर कंप्लीट बैट्समैन दिखाई देते हैं, एक प्रॉपर कंप्लीट बैट्समैन दिखाई देते हैं। स्लिप में इस वक्त कोई फील्डर नहीं है, तनितन हाफ विकेट कीपर है पीछे, इस वक्त कोई फील्डर नहीं है, तनितन हाफ विकेट कीपर है पीछे। ये फाइन लेग की जानिब खेला, ये फाइन लेग की जानिब खेला, अंपायर का सिग्नल देखना होगा, लेकिन अंपायर का सिग्नल देखना होगा। 12 रन्स बन रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट हो रही है, 12 रन्स बन रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट हो रही है, और बैट्समैन एक थ्रेट है। तो इस तरह ये 30 ओवर जो है मुकम्मल, इस तरह ये 30 ओवर जो है अब मुकम्मल हो चुका है। Qaddafi Stadium Lahore, ABS Developers National T20 Qualifier, ABS Developers National T20 Qualifier, 2025 Larkana versus Karachi Blues है। ये मैच लाड़काना वर्सेस कराची ब्लूज है। करने का फैसला किया, ब्लूज ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। एक विकेट को अच्छा आगाज है, रन बना लिए हैं, एक मल्हार अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, मल्हार अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, अकील दूसरी तरफ जमे हुए हैं, 22 रन बनाए हैं, जबकि नॉट आउट दूसरी तरफ जमे हुए हैं, 5 रन पर नॉट ड्राइव किया, ड्राइव किया, स्ट्रोक नहीं खेल पाए, बल्ले को घुमा दिया, ड्राइव किया लेकिन ड्राइव तो कर दिया, लेकिन गेंद कहाँ थी, ड्राइव तो कर दिया लेकिन गेंद कहाँ थी, माज को दाद देना होगी, तो माज को दाद देना होगी। फील्डर जो थे 30 गज के दायरे के अंदर थे, फील्डर जो थे ऊपर से खेलने का के दायरे के अंदर थे, तो कोशिश की ऊपर से खेलने का अकील ने, लेकिन इसमें कोशिश की थी ना हो पाए अकील ने, लेकिन इसमें कनेक्शन ना हो पाया, तो शायद एक और बाउंड्री देखने को मिलता, अच्छा तो शायद कोशिश की उन्होंने देखने को मिलती, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की उन्होंने, एक बड़ा शॉट खेलने की। यहाँ पर बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं क्रिकेट में, बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं क्रिकेट में, जो ड्रेस कोड है और जो डिस्प्ले है, जो ड्रेस कोड है और फैसिलिटी लोगोस, जो प्रमोशन लोगोस हैं वो बड़े अहम लोगोस, जिस प्रमोशन लोगोस हैं वो बड़े अहम हैं, जिस के साथ होते हैं क्रिकेट के गेयर्स के साथ, पर माज की और माज अच्छी गेंद थी इस पर, माज की और माज, as the time rolls on he will develop his body more, as the time rolls on he will develop his body more and more
to give a look of a genuine pace bowler. Nagging line रोलन से गेंदें कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा है। सोचते nagging line रोलन से गेंदें कर रहे हैं। मिडऑफ पर खड़े हुए रहते हैं वो भी इनके साथ तबादला ख्याल करते रहते हैं। खड़े हुए फील्डर हैं। एनकरेजमेंट बड़ी जरूरी है यंगस्टर्स को। ये मैच लाइव बड़ी जरूरी है यंगस्टर्स को। ABS लेवल पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। T20 Qualifier 2025 T20 Qualifier 2025 2026 बन गए हैं और कम वक्त में बने हैं और कम वक्त में बने हैं। ऊंचा स्ट्रोक सही टाइम नहीं कर पाए और 2 रन बनेंगे। सही टाइम नहीं कर पाए 2 रन बनेंगे। हर अटेम्प्ट या जो कोशिश है वो जारी है। अटेम्प्ट या आगे कोशिश है वो जारी है। ये कोई दकीका नहीं छोड़ रहे हैं। ये कोई दकीका नहीं छोड़ रहे हैं कि तगदों में लगे हुए हैं। अगर से गेंद को मिडल करने की तगदों में लगे हुए हैं। अगर और पुल्स और हुक्म में देखी क्रैकिंग ड्राइव्स और पुल्स का एक छक्का और चौका उनको तोहफे में जरूर मिला। कम से कम एक छक्का और चौका तोहफे में जरूर मिला। एजी स्ट्रोक से दोनों पर मेहरबान रही। लेकिन जाहिर है कि कोशिश करते हैं दोनों। अकील दूसरी जाहिर है कि कोशिश करते हैं। एक अकील दूसरी तरफ प्रॉपर एक शॉट्स खेलने के तगदों में लगे हुए हैं। शॉट्स खेलने के तगदों में लगे हुए हैं और ये सामना करेंगे अगली गेंद का। बीच होगा। ये सामना करेंगे अगली गेंद का। ये टेस्टिंग टाइम होता है फॉर अ बैटर। यहाँ पर टेस्टिंग टाइम रिक्वायर्ड होती है बैटर। यहाँ पर बड़ी टेक्निक रिक्वायर्ड होती है ऑफ अटेम्प्ट जिसमें आप स्क्वायर कट खेलने की कोशिश करते हैं। ऑफ अटेम्प्ट पिछले कदम पर खेलने की कोशिश करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले कदम पर जाते हैं। ये दूसरी मर्तबा इस ओवर में हुआ हमने कि मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश की। हमने कि मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश की, नाकाम हुए। पूरी तरह ना पाए बैट के साथ, नाकाम हुए। कनेक्शन ना बना पाए बैट के साथ। यंगस्टर हैं अभी मॉज, लेकिन यंगस्टर हैं अभी मॉज, लेकिन काफी कुछ सीखने को है। यहाँ पर आपको अपनी क्राफ्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना, यहाँ पर आपको अपनी क्राफ्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना होता है। सेलेक्टर्स इस टेक्निक का मुजाहरा को देख रहे हैं। सेलेक्टर्स आपकी आज को देख रहे हैं। किसी की गहराई आपकी अशद जरूरत है बाकी कराए जाते हैं। विकेट को आउटसाइड इवेंट्स इसलिए कराए जाते हैं। ताखीर से अपील की है, लेकिन ताखीर से अपील की है लेकिन नहीं। इस सूरत हाल में जानते और समझते हैं कि अपील का मकसद क्या है। जानते और समझते हैं कि अपील का मकसद क्या है कि हमने तवज्जो मबजूल कराना देख लिया है बैट कि हमने तो पैड देख लिया है। गेंद को लगना आपका सिलसिले में क्या तासुर या गेंद को लगना आपका सिलसिले में क्या तासुर यार अपनी जगह पर साकित रहे। कोई जवाब नहीं दिया। जगह पर बाज़ अंपायर नॉट आउट भी कह देते, कोई जवाब नहीं दिया। बाज़ अंपायर नॉट आउट भी कह देते इस पर एक। और ये चौथे ओवर की आखिरी पर एक और ये चौथे ओवर की ओवर जो है इस लिहाज से कफायत रहा है कि ओवर जो है इस लिहाज से कफायत गेंद नहीं दी, कोई शॉर्ट गेंद नहीं दी, कोई फुल लेंथ गेंद नहीं दी, कोई शॉर्ट गेंद नहीं दी। अकील सामना करेंगे अगली गेंद का। बीच हो गए आउटरेज, बेहतरीन गेंद से कहना होगा। आउटरेज के करीब होती हुई सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में गई। तो इस तरह अब ये चौथा ओवर मुकम्मल हुआ। लाड़काना 32 एक विकेट के नुकसान पर। इस मैच में जो ऑफिशियल्स हैं उसमें फारूक अली खान और अहमद शहाब अंपायर हैं। और अब रजा चांडियो आए हैं। बड़े खूबसूरत नाम हैं, इलाके की शनाख्त है और जाहिर है कि ये अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए एक काबिल फ़ख्र सबूत हैं। और ये नौजवान जो हैं इस वक्त कौमी सतह पर अपने रीजन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। टू द लाइन ऑफ द लेग स्टंप, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप कंटेन करें, कदगन करें, विकेट बाइंग बॉलिंग मत करें। अगर रजा चांडियो इस सुनहरी असूल पर कारबंद हो जाएं तो टीम के लिए एक ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम देंगे। हमने टॉप पे देखा है कि बाज़ बॉलर रन थ्रू करने के सिलसिले में गेंदें ऐसी करते हैं जहाँ पर बैट्समैन या तो छक्का लगाएं या वो आउट हो जाएं। अब ये टू द लाइन ऑफ द लेग स्टंप, ये वो गुस्सेदारी असूल है कि जब बैटर हिट के लिए जाए तो आप उसकी लाइन ऑफ द लेग स्टंप अटैक करें, उस पर कदगन लगा दें, उसको रोक दें। शायद रजा चांडियो की ऐसी तरबियत हुई है और ये बड़े अच्छे बॉलर दिखाई देते हैं। लेकिन ये T20 जो है ये 4 and 6 का खेल है। एक और अच्छी गेंद। ही इज़ अ ग्रेट ट्रायर, naturally look gifted and have
some killer instinct in his bowling. जी, और पिछले मैच में भी बड़ी दबी-तुली बॉलिंग की थी रजा चांडियो ने, एक कामयाबी भी मिली इन्हें। और आज भी पिछले मैच की तरह जो बेसिक्स हैं उसी को थामे हुए हैं। जैसे पहले बैट्समैन थोड़ा पीछे गए, रूम बनाने की कोशिश की तो उन्होंने फॉलो किया प्रॉपर बैट्समैन को, और रूम जो चाहते थे वो नहीं दिया मल्हार को, और इस मरतबा दिफाई स्ट्रोक खेलने पर मजबूर किया। नहीं, बहुत अच्छी गेंद है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। देखिए इन्होंने वो गेंद नहीं की कि मैं मिडल और ऑफ पर करूं और बैट्समैन ने गलती करे, मल्हार गेंद को सीधी किस ना खेले, मुझे विकेट हासिल हो जाए। इन्होंने रोक दिया, कदगन लगा दी मल्हार पर रजा चांडियो ने। ये बेहतरीन गेंद थी, मैं कहूँगा मुश्किल तरीन काम था इस गेंद को हिट करना फॉर मल्हार। उनका कदम कहीं थे, बल्ला कहीं था, आंख कहीं थी, और रजा चांडियो एक अच्छा पहला ओवर करते हुए 3 डॉट गेंदे हैं, और इस नहज पर आए हैं जब 5वां ओवर शुरू हो चुका है। इंफरादी तौर पर पहला ओवर कर रहे हैं। ये घुमाया है और अच्छा घुमाया है गेंद, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। तो मल्हार इस बार कामयाब हुए बड़े अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं कि एक वो अटेम्प्ट की जिसमें डेस्परेशन भी थी, लेकिन जाहिर है कि मल्हार अच्छी निक में अच्छी फॉर्म में है। गेंद बिलाकर मिडल हुई और 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। एक बार फिर रूम हासिल करने की कोशिश की मल्हार ने और फॉलो किया इनको रजा चांडियो ने, लेकिन इस मरतबा कनेक्शन बहुत ही लाजवाब रहा। 4 रन का इजाफा हुआ मल्हार और लाड़काना के स्कोर में। 36 पर पहुंच चुका है लाड़काना, 2 गेंदे बाकी रजा चांडियो के पहले ओवर की। बीच हो गए, एक और चौके के बाद अच्छा कमबैक किया है रजा चांडियो ने। ये बड़े हौसले की बात होती है, जिसे उर्फ आम कहते हैं बड़े जिगरे की बात होती है कि आप विद इन द स्टंप्स गेंद कर रहे हैं। चौका खाने के बाद आपने कोई वाइड नहीं किया, कोई ऐसा लूज गेंद नहीं किया जिस पर दोबारा अटेम्प्ट करें मल्हार। अब देखिए पहले 3 ओवरों में 30 रन हासिल कर लिए थे लाड़काना ने। पिछले ओवर में बड़ा बेहतरीन ओवर था जिसमें सिर्फ 2 रन आए, और उसका असर हमें इस ओवर पे भी नजर आ रहा है। और इस ओवर से भी सिर्फ अब तक 4 रन ही हासिल किए हैं, तो ये 2 ओवर्स तशवीश का बायस है लाड़काना के लिए। अच्छी बेस है। इस दौरान रजा चांडियो आए, ऊंचा शॉट खेला है, लॉन्ग ऑफ पर फीडर है, यानी ये देखना होगा, और गेंद ऐसी जगह पर गिरी जहां पर कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए वाली बात थी। बहरहाल बैटर दौड़ते रहे, ये एक फ्रस्ट्रेशन में स्ट्रोक था, और इस तरह अब इस स्ट्रोक के साथ हम देख रहे हैं कि 5वां ओवर खत्म हो चुका है। लाड़काना 38 एक विकेट के नुकसान पर। It won't be lucky enough. That's a wicket for Mars. Good catch under pressure. It was in the air for a little while. Ends the inning of Akil. Reza Chandio getting a good catch in the covers. They were just getting a little eager. The pressure of scoring more runs in power play probably getting to them. They're just making him wait a little while just to have a look at the no ball. And it's a good time to welcome alongside Mr. Salman, but there is no problem here. Thank you, Ali Bhai. Good afternoon to you and to all the viewers, and Assalamu Alaikum. Yes, fair delivery and easy catch offered as Mars picks up this wicket. The second one to fall for Larkana. Karachi Blues gaining control in the power play, getting 2 wickets for 38. It's 5.1 overs bowled.
डर रहता है, ये टेंशन नहीं रहता, तो यही होता है, ये तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। हटके वो मिड विकेट पॉइंट नहीं है, मैंने वो एज लग के उधर पॉइंट पीछे नहीं, एज का बॉल कुछ नहीं कर सकते। Ghulam Raza at number 4 for Larkana. This is ABS Developers National T20 Cup Qualifiers. Larkana coming into this game after being beaten in the previous game. By Islamabad. In Karachi, they won their previous game, so they're more confident side, but they had a little issues to resolve in this game, which they have done so far. They've done well in as far as fielding is concerned. Yeah, gentle full toss outside the off stump for one. Yes, had this second wicket not fallen and runs around 45, you could have said that it's an okay start. But now that 2 wickets have fallen and the number of runs isn't great, you got to say that Karachi has got it in control so far. It's Malhar, 28 of 16. He's going well. He's played well. Once again tries to heave it over mid-wicket, but the top edge takes it in the vacant third region. Another boundary. Lots of intent, but the method quite questionable. Yeah, it's been working for him. Scored a 50 in the previous game. And over here, yes, you can always argue on that, but it's the runs that matters for him and the team. He will gleefully take them. Yeah, very interesting stats, Salman, but as far as the power plays are concerned, as the day progresses, we head into the night, batting gets easier. More strokes we see, 56 runs. Maybe dew has been a factor. The ball goes into the outfield and it gets a touch wet. So less swing. Well, this is a good stroke. And there's a fielder who does well. Takes it on the bounce. It was quite an awkward take, but he made it look really easy. Wahaj Riaz, the fielder. And Malhar gets off strike with a good pull stroke. He's been very positive in his stay of 18 deliveries. He's gone to 33, striking at 150 plus. The other side is where he has to look for a partner who can form a partnership with him, stabilize the innings, provide a platform. This is appeal, but surely down the leg side, and the umpire thinks so as well. This ABS Developers National T20 Qualifiers 2025-26. This is a chance for lots of youngsters and the teams to display their skill, to win games and to qualify for the main round and be in that first two, so they can go up and climb the ladder and be part of the top 8 and make it top 10 and then really fight it out there. Oh, this is well played. Third man wide and a short ball. Really well played, this one. Well watched till the end, and in the end just a cute little touch was enough to take it for 4. .48 at the end of power play with the loss of 2 wickets, Larkana.
And Wahaj comes in and straight away Malhar steps down the wicket, but doesn't make a decent connection. Gets the one of the inside edge. Wahaj in the previous game picked up a wicket, gave away 24 runs of his spell. And here he is again. There hasn't been much turn on offer for the spinners, but definitely the ball does skit on. It just carries on with the arm or with the drift. Remember, this is not the Kookaburra. This is the PCB's own developed ball. And this might be a soft dismissal. Playing a shot which wasn't under his control. Not a great delivery, but good enough to earn Ghulam. And Wahaj picks up another wicket, this time in his very first over of the second ball, as Ghulam will have to leave for 5 runs that he scored of 3 deliveries. Another look, fair delivery that. And just have a look at this. Way outside off stump. And in the end, it's really a soft dismissal. He'll be disappointed. Ghulam Raza wasted an opportunity. 504 he got, Larkana 49 for 3. शॉट में आओ, स्लिप आओ, एहसान में स्लिप करते हो, वहाँ आओ, वहाँ शॉट में आओ, वहाँ शॉट में भाग के बेटा, आरिश अंदर से पीछे रहना, अंदर रहो रजा, अंदर ही रहो, अफजल भाई अंदर हो, बस ठीक है माज, ठीक है चांडियो बस, बोलना एक साथ, बाहर वाली, आगे आओ, बाहर रहो, आवाज Lovely. Well done, lovely, shabash. ये बॉल है वहाज. Yeah, dot to start with. Mohsin has come in, and he is the wicket keeper, and he has now big responsibility on his shoulders. Once again, tossed outside off stump, just asking the batter to just drive it far from his body, and that's exactly what the previous batsman did. Wow, beautifully bowled, tossing it up, and the ball straightening. Just as we mentioned that there isn't much turn available, in fact no turn, so the ball just skids on. Ball also has quite a bit of lacquer, which doesn't help in getting it to spin. Ghazi Gori, the keeper, he was quick to take the bails off. They've referred it to the third umpire. Yeah, no problems with the front foot. Just went outside the crease for a bit, and from here it seems that he's just come back. Just in, maybe. Yeah, just in. As Ghazi Gori takes the bails off. This is living on the edge. From this angle, it seems that he's maybe just that tiny little margin, minute of margins in the line. Some part, maybe a nail. If we have another angle. Tariq Rashid,
The third Oh, umpire. here is one angle where his foot goes in the air and the bails are taken off. So maybe the umpire reckons that it's out. There was this frame, a very important one. The umpires and the batter, concerned look on the batter. That's what you would expect. Yeah, this is a closer angle. Over here, the foot seems to be just a tiny bit in, but once the bails have been taken off, then the foot goes in there. Now, this would be interesting because when he strikes the bails off, the foot has landed in the crease. But as soon as the bails go off, the foot will take off as well. So I don't know what the umpire would think because the bails are off here and now the foot will start to lift. I don't think that will be out. I don't think so. Yeah, it's been, by the look of things, it's been given not out. By the barest of margins, as Ian Smith would say. Not out signalled. Tariq Rashid, the third umpire, had to make a difficult decision, and I think he's done really well in giving the benefit to the batter, which should be the case. 49 for 3. Oh, next one is just scooped one straight to the fielder. Yeah, it's very short stay from Mohsin, just 4 deliveries that he could stay in the crease, and now has to walk back. A good delivery from Wahab and a simple catch for the fielder. Yeah, once again, that straight ball. The bowler tossing it up. The batter looking to play the turn. I don't know why, because there isn't any available. Fair delivery once again. No problems there with the front foot. And the batter, well, he'll have to leave. It was a brief stay. A duck of 4 balls is what Mohsin got. Larkana in further trouble, 49 for 4 after 7. नहीं पीछे कौन है वहाँ पीछे नहीं आप पीछे जाओ हाँ बाहर रहो एहसान भाई बाहर रहो वहाँ थैंक यू सर लेग स्टंप प्लीज अंदर अफजल भाई अंदर हो माज अफजल भाई और हो गए बस माज अंदर हो ठीक है चले बस सही है यहीं से आरिश Yeah, Arish now, the left arm spin of him. A lot of eyes for Larkana in the previous game were on Malhar, and even in this game also, he's the one who's just glued to one end, scoring most of the runs. He scored a 50 in the previous game. Very wristy he is, and a strong man, and finds the gap too. This is good from the youngster. Yeah, this is a poor delivery. Left arm going down the leg side with the angle. There is no turn available on this pitch, but that just the angle wide of the crease and targeting towards the middle and leg and going further away and just helped on its way. There was a big gap to be exploited and Malhar had no problems. Once again tries to sweep a ball which was there to be taken advantage of. Another wide ball. So this isn't a great start from Arish. Yeah, seems like he's hurrying the batter, bowling quick deliveries. We have seen bowlers do that, but that's underlies.
when they have due and are able to turn the ball, that's where we have seen bowlers just bowl those quick deliveries. But at this point of time, you can give a little bit of fair and look for a turn. Although there is not much available, but still just search for it. Cuts well, just for one though. Karachi Blues did a good job in the previous game, but they came very close. They won the game in the last over. That was a little bit of concern for them because they're a young side. We expect them to be at the best of their games. Today they've been better. Fielding has been better. The intent has been better. The approach towards the ball has been better. These youngsters have been coached by a very seasoned campaigner. Saeed bin Nasser has got a fantastic first-class record. And I'm sure he will be working on them. He must have realized what was wrong in the previous game. The intent was not quite there. What we'll do is, we'll try to talk to him. Saeed bin Nasser, the coach of Karachi Blues, if he can hear us. सईद भाई, आप क्या, हमें आवाज आ रही है हमारी? जी जी आवाज आ रही है। सईद भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंटेंट अलग लग रही है, आज एनर्जी डिफरेंट लग रही है। लगता है बात हुई है पिछले मैच की जो कोताहियां हुई उस पर काफ़ी काम किया गया लग रहा है। जी हाँ, हमने प्रैक्टिस सेशन में जो चीज़ें हमने गलत की थी, जो हमारे ग्रे एरियाज थे, हमने उसको कवर करने की कोशिश की है। और काफ़ी हमारी यंग टीम है, तो इंशाल्लाह एनर्जेटिक है टीम, तो रिजल्ट भी इंशाल्लाह अच्छा आएगा। एज अ कोच आप इन यंगस्टर्स को कैसा देखते हैं जिस तरह से उन्होंने गलतियां की? क्योंकि बाकी बैटिंग और बॉलिंग की तो शायद माफ़ी हो सकती है, लेकिन जो फील्डिंग में गलतियां हुई उसको कैसे डील करते हैं आप? देखिए, फील्डिंग में लाजमी सी बात है, हमने कोशिश की है, जो भी हमारे ग्रे एरियाज थे उस पर कोशिश की कि इनको जो हमने सेशन किए उसमें इनको बताया कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। 11,000 रन आपके अपने हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि इस कराची की टीम में भी कोई ऐसे यंगस्टर्स हैं जो इतनी लंबी क्रिकेट इतने अरसे तक खेल सकेंगे और इतने ज़्यादा रन्स कर सकेंगे? ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं यंगस्टर्स? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल अप्रोच क्या है, आपने आपको किस तरह यूटिलाइज़ करना है। प्रोफेशनल क्रिकेट है, आपको पता है क्रिकेट ज़्यादा हो गई है, और इसमें अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं और तो डेफिनेटली आप खेल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, क्या हाल है? सलमान भट्ट बात कर रहा हूँ। सलमान अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है सईद भाई। ये हम तो इकट्ठे खेल भी चुके, हमने इंडिया पाकिस्तान ए का टूर किया था। जी जी। क्या बदला है तब में और अब में? क्या चीज़ है जो यंगस्टर्स में समझ लिया उस वक्त से बेहतर है, और क्या चीज़ है जो आप चाहेंगे कि वो वाली होनी चाहिए जो उस वक्त थी? मैं ये समझता हूँ कि हमने ना बेसिक को बिल्कुल छोड़ दिया है। एक अच्छा बैट्समैन जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो हर जगह अपनी अगर अच्छी प्रॉपर क्रिकेट खेले तो वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब जो स्पेशली T20 क्रिकेट है, जो हमारे लोगों का माइंडसेट है ना, वो ये होता है कि जाके स्लॉक करके मारना है। आई थिंक कि सबसे बड़ा फ़र्क ये है, अगर अच्छा बैट्समैन है, टेक्निकली अगर अच्छा है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि 30 से 35 बॉलों पे 50 नहीं कर सकता हो। तो ये मुझे लगता है कि इसमें हमारे लोग लैग कर रहे हैं। सईद भाई बहुत खूबसूरत बात की है, बड़ा उम्दा आपने सम अप किया है। ये भी बता दीजिए कि फ़िटनेस में कितनी तब्दीलियाँ आई हैं, और अब एक प्लेयर के लिए एक अच्छा एथलीट होना कितना ज़रूरी है? देखिए, अभी जिस तरह क्रिकेट में आपने देखा है, मॉडर्न डेज क्रिकेट आई है, इसमें टोटल मैं समझता हूँ कि फ़िटनेस का ही काम है। जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनको अपने आप को 110% फिट रखना पड़ेगा, वरना आप क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। सईद भाई, अभी आपने जिक्र किया कि अब मेंटली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। मैं जब आप लोग खेलते थे आप ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग थे आई बिलीव, तो क्या हम मेंटल एस्पेक्ट को लेके इन प्लेयर्स के ऊपर कोई काम हो रहा है? इनको कैसे मेंटली स्ट्रांग किया जा सकता है ताकि अपने करियर को बेहतर और लंबा कर सकें? देखिए, खेलने की जब तक कि आप क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेलेंगे, जब तक कि आप, मेरा नहीं ख्याल कि मेंटली स्ट्रांग होंगे। अगर हम, लाजमी सी बात है, अब जो हमारे पास फॉर्मेट है, आपने देखा होगा कि जो कराची हो गया, लाहौर हो गया, हमारे पास अब T20 क्रिकेट ज़्यादा होती है। जो पहले टाइम था उस क्रिकेट में हम 40 ओवर्स 50 ओवर्स के मैच खेलते थे क्रिकेट में, जिसमें टेम्परामेंट भी आता था, फिटनेस भी आती थी, और आपका मेंटल स्ट्रांग भी आप होते थे। तो सबसे बड़ा फ़र्क मेरा ख्याल है यही है कि जो शॉर्ट फॉर्मेट की वजह से जो आपका जो टेम्परामेंट है, और उसकी वजह से हम लैग कर रहे हैं।
या ये हम अक्सर ये बात करते हैं, सलमान भी इस चीज़ का एम्फेसिस करते हैं कि शॉर्ट फॉर्मेट की वजह से काफ़ी तब्दीली आई है गेम के अंदर। तो क्या हम शॉर्ट फॉर्मेट के ही अंदर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग होने के लिए कोई काम कर सकते हैं या कोई डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, ताकि अगर आप दुनिया शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ जा रही है तो क्या उसी के अकॉर्डिंगली हम कोई काम कर सकें? देखिए मेरा ख्याल है कि अगर हमें फिर तो ना इस तरह करना चाहिए जैसे दुनिया में हो रहा है कि आप अपने टीम के लिए अपने प्लेयर सेलेक्ट कर लें, जो 4 डे खेलना चाहते हैं उनको 4 डे खिलाएं, जिनको T20 खेलना है उनको T20 खिलाएं। अगर हम फॉर्मेट चेंज कर देते हैं तो उनका फिर माइंडसेट क्लियर होगा। तो आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो 4 डे नहीं खेलना चाहते हैं लेकिन वो मजबूरी में खेल रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से। सईद भाई आखिरी आपसे सवाल है, इसके बाद हम आपको जाने देंगे। ये खूबसूरत गेंद थी सईद भाई, विकेट गिर चुकी है, उम्दा बॉलिंग जारी है वहाज की तरफ से, और अभी आपकी तरफ वापस आते हैं सईद भाई। जी जी that is not an issue with the front foot. Once again Wahaj picks up another wicket. He is just running through this middle order of Larkana, and they're still getting beaten by the straight ball as if they're expecting it to turn. There isn't going to be any turn. Malhar Rasool, 41 of 25, played well and was out to a ball which just went in with the arm. Larkana 61 for 5 after 9. जी सईद भाई, जी सर, आप साथ है, सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। सईद भाई आखिरी सवाल ये है कि आपको लगता है कि लंबी क्रिकेट खेलने से छोटे फॉर्मेट के अंदर भी बेहतरी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। जब आपके अंदर टेम्परामेंट होगा, शॉट सिलेक्शन आपकी अच्छी हो जाएगी, तो डेफिनेटली आप हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक एज तक तो इसका मतलब है कि बच्चों को लंबा फॉर्मेट लाजमी खेलना चाहिए। बिल्कुल खेलना चाहिए। बहुत शुक्रिया सईद भाई, थैंक यू। आप अपना एक्सपीरियंस ट्रांसफर करें, लड़के आपसे फायदा उठाएं। ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। 2600s in his first class career. Saeed bin Nasir, 11,025 runs in 191 matches for Saeed bin Nasir, such a prolific performer of his time. As Salman suggested that they both toured India, Salman, together. Yes, Pakistan A. Shahid Afridi was the captain, and we played in Kolkata. We played against India, Sri Lanka, and that was a Tri-Nation tournament. And this is the last wicket to fall. Batter just didn't have a clue. The ball just going past, holding its line with the angle. And Wahaj enjoying his third. But Arish has been offline. And as a result, he's given away runs and also not looked likely to pick up a wicket. Saeed bin Nasir was a very intelligent batter, a middle order player, and to score 2600s and to play 191 games is no easy or mean feat. And he's played loads and loads of cricket in an era when first class cricket was quite competitive. And this is a good single, just angling the bat, pushing the ball in the gap, good calling as well. So there's a great opportunity for the Karachi young boys to get his brains from him, keep asking him questions, just get any portion of experience extracted from him. Confusion in the middle, but yeah, safely to their spots, both the batters. Zad Mahmood playing at number 7. 64 for 5. Tera Murad Jamali were brilliant yesterday. I think something to learn for Larkana from them. How not to give up. They kept on fighting, although they were chasing 178 or 179 rather. But they kept on fighting. They kept believing that they can win. A few cameos in the middle. I think Larkana's or Bawalpur's or AJK's, your young sides, they should be looking towards them. That's how you challenge bigger sides. We'll talk more about it when we come back in the next session, because 10 overs have done. It's 66 for 5 and time for drinks.
कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी है ABS डेवलपर नेशनल T20 क्वालिफायर 2025-2026 और ये लाइव मनाजर है लाड़काना वर्सेस कराची ब्लूज। लाड़काना ने पहले बैटिंग की है आफ्टर दे वर आस्क्ड टू बैट फर्स्ट बाय कराची ब्लूज और वन द टॉस। आज बॉलिंग करेंगे दिफाई स्ट्रोक ऑफ साइड पर की आवाज़ और एक रन मुकम्मल किया, ओवर थ्रो हुई है, मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी था। और स्पिनर्स आमतौर पर जल्दी ओवर ख़त्म करते हैं। आज जो हैं वो इससे पहले भी 2 ओवर कर चुके हैं। ये जेंटल पुश थी ऑफ साइड पर और थ्रो लगती है अगर डायरेक्ट तो यकीनी तौर पर जो विकेट्स का कॉलम था इसमें इजाफा देखने को मिलना था। मुश्किल सूरत हाल है लाड़काना के लिए। 67 पर 5 और वहाज की तबाहकुन बॉलिंग जारी। कलाई का अच्छा इस्तेमाल, स्ट्राइक रोटेट होगी। वहाज काफ़ी एयर देते हैं और जो ऑफ स्पिनर हैं उनकी गेंद में नेचुरली कुछ ना कुछ स्पिन सरफेस जैसी कैसी भी हो वो हो जाता है, गेंद टर्न हो जाता है। वहाँ असल में एयर ज़्यादा देते हैं और गेंद को काफ़ी आगे फेंकते हैं। इस गेंद को ज़ोरदार तरीके से ड्राइव किया है और गेंद जाएगी 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। अब ये वो सम थी, ये वो जगह थी जहाँ पर आमतौर पे गैर आबाद इलाका होता है, फील्डर से मुबर्रा होता है। यहाँ पर कोई फील्डर नहीं होता, बॉलर के बिल्कुल पीछे, और इस बार लंबी फ्लाइट दी वहाज ने और उसका पूरा फ़ायदा उठाया बैटर ने। यह सबसे महफूज मकाम जहाँ पर ये ड्राइव खेला गया, बॉलर्स बैक और बाउंड्री हासिल की और कुछ इत्मीनान का भी सांस लिया होगा। कट हवा में रही लेकिन महफूज डीप कवर की जानिब। रवायती तौर पर यहाँ पर फील्डर मौजूद होता है फॉर एन ऑफ स्पिनर। और इस सूरत हाल में जब 11वां ओवर शुरू हो चुका हो, ये जाहिद हैं सरकर्दा और तजुर्बाकार क्रिकेटर, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 2 वाइड स्टांस है इनका। जेंटल पुश ऑन साइड पर 1 रन बनाया, सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा। आज ने जैसा आपने बताया कि बड़ी नपीतुली बॉलिंग की है, 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं। तो T20 क्रिकेट में 3 विकेटें हासिल करने का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं तो ये 5 या 6 विकेट तस्वर की जानी चाहिए। बड़ी अच्छी एफर्ट है इनकी। आखिरी गेंद करेंगे ऑन साइड पर ड्राइव, आसानी से 1 रन दूसरा बनाने की कोशिश करेंगे। फील्डर गेंद के पीछे आए, सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा। तो इस तरह 11 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ। लाड़काना 5 विकेटों के नुकसान पर 75 रन। चाय के पुरलुत्फ घूंट हैं और ये खूबसूरत मनाजर हैं। उस्मान अरशद डिप्टी कलेक्टर हैं, उनकी बड़ी ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा काम किया उन्होंने। और अहमद शहाब को आपने देखा, ये नॉन स्ट्राइक करंट पर हैं। इस दौरान आरिश गेंद करेंगे, अच्छी गेंद थी। ये सूरत हाल ऐसी है जिसमें अब बॉलर हावी हो चुके हैं। स्पिनर्स जो हैं वो बड़े एतमाद से बॉलिंग कर रहे हैं। हुज़ैफा और जायद हिट आउट नहीं कर रहे, विकेट पर स्टे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब डीप कवर में गेंद जाएगी, तयशुदा है कि सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा। ऑल राउंड द ग्राउंड इनको ज़ाहिर के वक्त मिलेगा। अगर ये कुछ देर और टिक जाते हैं विकेट के ऊपर, अच्छी रफाकत कायम करते हैं, तो फिर जो 16 ओवरों के बाद खेल होगा उसमें रन्स को तेज़ी से उसमें इजाफा करने की कोशिश करेंगे। अभी तो ज़ाहिर है कि इब्तदाई बगाड़ पैदा हुआ है। 5 विकेटें खो चुकी है लाड़काना की टीम। अच्छी गेंद, रोक दिया, कदगन लगा दी, मजबूर कर दिया कि इस गेंद को पूरी इज्जत दें। जाहिद दिफाई अंदाज से खेलने पर मजबूर हुए। और इस 2 ओवर 3 गेंदें 14 रन, अच्छी कफ़ायती बॉलिंग की है। काफ़ी कफ़ायत शार वाक़े हुए हैं, अच्छी लेंथ से गेंदें करते हैं, ये बात तयशुदा है। रिवर्स स्वीप और इस बार उस जगह पर गई है जहाँ पर फील्डर मौजूद नहीं थे। अच्छा जुर्रतमंदाना स्ट्रोक था और बर वक्त भी, तो बाउंड्री हासिल मिलाकर हुई है जाहिद को। ये गैर मामूली स्ट्रोक था जाहिद की जानिब से। इसको तवक्को नहीं कर रहे होंगे आरिश अली खान की एक रिवर्स स्वीप उनके अगेंस्ट अटेम्प्ट होगी। बड़ी जल्दी स्विच किया और कनेक्शन बनाने में पूरी तरह से रहे कामयाब।
आपस में बातचीत क्रिकेटर्स करते रहते हैं। जो स्टम्प्स माइक है उसके ज़रिए शायद आपने सुना हो कि रिवर्स स्वीप के हवाले से विकेट कीपर ने बॉलर को तंबीह की थी कि आप अगर ऐसी गेंद करेंगे तो जाहिर ट्राई करेंगे, और वो कामयाब ट्राई करते हैं। इसमें उनको काफ़ी महारत हासिल है। जबकि हुज़ैफा आरिश अली खान की अगली गेंद खेलेंगे। इस ओवर में अब तक 6 रन बन चुके हैं। हालात के पेश नज़र ये अच्छा ओवर है। नॉन साइड पर पुश, जेंटल पुश, 1 रन का इजाफा हुआ है। कीपर की तरफ कहा गया है कि फेंका जाए गेंद को, लेकिन इक्तफा कर चुके थे एक ही रन पर दोनों बैटर। 81 के बाद 82, 5 विकेटों के नुकसान पर 12 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। फैसलतर को आपने देखा, और ये बुलंद बाला एक वो लाइट टावर है जो कि सूरज के बिल्कुल सामने है। क्या नाम बताया? हाँ भाई, टाइट रहना है पहले बॉल से। आ जाओ, चल। तो लेफ्ट आर्म वहाज की जगह जो बॉलिंग की भाग दौड़ है वो इस वक्त हम देख सकते हैं ताहा के हाथ में। तो पिछली मर्तबा की तरह आज भी मल्हार वो वाहिद बैट्समैन थे जो मुकाबला करते रहे। बहुत बार गेंद थी, शॉर्ट थी। 1 रन का इजाफा होगा। रन्स में इजाफा करना होगा और इसको उस मुकाम पर लेके जाना होगा जो कि 140 से ऊपर का हो। इस ओवर के बाद भी मजीद 7 ओवर फेंके जाएंगे। ये दोनों इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, जाहिद रिवर्स स्वीप खेल सकते हैं। जाहिद का जैसे मैंने पहले जिक्र किया 2 वाइड स्टांस है। अच्छी गेंद थी डिप के साथ। अच्छी फ्लाइट भी करते हैं, गेंद को घुमाने की कोशिश भी करते हैं। गेंद में बाइट है और ताहा की यही खूबी है। ये वजह है कि अभी तक सिर्फ 2 सिंगल उन्होंने कंसीड किए हैं। सिंगल्स मैटर नहीं करते T20 क्रिकेट में इस सूरत हाल में, जबकि 13वां ओवर शुरू हो चुका है और इसकी भी अब 30वीं गेंद की जाएगी। ड्राइव, टॉप पर फील्डर मौजूद है डीप पोजीशन पर। सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा। तो यहाँ पर हम सोच रहे होंगे हुज़ैफा भी और जाहिद भी कि अपने बल्ले को, जैसे उर्फ़े आम कहा जाता है, कि कब खोलेंगे और ऊंचे स्ट्रोक खेलेंगे, लेकिन अभी वो सूरत हाल है नहीं। अभी काफ़ी खेल बाकी है। रुक गए और गेंद को अपने बैट के ऊपर आने दिया। अच्छी सा मजबूत से 1 रन मुकम्मल किया। 6 सिंगल्स भी इस सूरत हाल में काफ़ी होंगे, जबकि जाहिद और हुज़ैफा तगो-दो में लगे हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्राई को रोटेट किया जाए, गाहे बाउंड्री ट्राई की जाए। ये प्लान इस वक्त वाज़िया है कि जाहिद चूँकि तजुर्बाकार हैं और वो चाहते हैं कि किस तरह इनिंग्स बिल्डअप की जाए और 16-17 ओवर तक इसी विकेट के साथ जाया जाए और फिर स्लॉगिंग की जाए। ओवर पिच, यहाँ पर आम हालात में बैटर काफ़ी ज़ोरदार स्ट्रोक खेलते हैं। ओवर पिच गेंदें जो होती हैं इनको फिर ये फुल टॉस भी बना लेते हैं, लेकिन थोड़े संभले हुए हैं, कुछ सहमे भी हुए हैं, क्योंकि पै दर पै विकेटें गिरी। 5 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा है अब तक लाड़काना को। ये कलाई का इस्तेमाल है। इससे ये तासुर ज़रूर मिलता है कि ये तजुर्बाकार बैटर हैं और सूरत हाल के तहत ज़ेर दबाव भी हैं, कॉशियस हैं, मोहतात हैं। 13 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ। लाड़काना 88, 5 विकेटों के नुकसान पर। ये बैटिंग कार्ड है लाड़काना का, और आप देख सकते हैं कि मल्हार के अलावा जो दीगर बैटर थे डबल फिगर में नहीं दाखिल हुए। अब हुज़ैफा 18 पर नॉट आउट हैं और उनके साथ जाहिद 12 पर नॉट आउट। मल्हार ने एक मरतबा फिर लोहा मनवाया है। बिग शॉट्स देखने को मिले, लेकिन आज 50 नहीं बना पाए। 41 रन की बारी खेली, वो बारी जो थी वो काबिल दीद ज़रूर थी, लेकिन दीगर बैटर को भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। रजा चांटियो एक मरतबा फिर
फिर दूसरे स्पेल के लिए ड्राइव, फुल ब्लडेड ड्राइव है डीप कवर की जानिब, फील्डर की कोशिश होगी इसको रोकने की, लेकिन इसमें नाकामी हुई। गेंद हाथ से लगने के बाद जाके बाउंड्री लाइन को छू चुकी है। तो इस तरह आते ही एक जोरदार ड्राइव लगी है रजा चांडियो की गेंद पर। ये तोहफा था फॉर जाहिद जो कि ड्राइव करना पसंद करते हैं, तमाम बैटर ड्राइव करना पसंद करते हैं। ये सहल और आसान गेंद होता है हिट आउट करने के लिए, और जाहिद ने उस वक्त में स्ट्रोक को खेला जहाँ पर फील्डर थे, लेकिन गेंद की लाइन ज़रा मुख्तलिफ थी। ड्राइव सही प्लेस पर की। ये ऑप्शन से थोड़ी बाहर थी, रूम था यहाँ पर जाहिद महमूद के पास, और ये मौके को जाने नहीं देना चाहते थे जाहिद। अच्छी डाइविंग एफर्ट यहाँ पे पुट की विकेट फील्डर ने, लेकिन बॉल को ना रोक पाए। ये इसको फ्लिक करने गए थे, अब ज़ेरे दबाव आ गए हैं थोड़ा सा। रजा चांडियो वाइड करार दे दी गई है। अहमद शहाब ने अपने हाथ फैलाए और स्कोर की तरफ इशारा किया। पहली गेंद पर जब चौका लग जाए तो जाहिर है कि ये कोई अच्छा आगाज़ नहीं होता फॉर एनी बॉलर, स्पेशली जो फास्ट बॉलर होते हैं। रजा चांडियो नौजवान है, दूसरी तरफ जाहिद का तजर्बा काफ़ी वसी है, तवील अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और टॉप क्रिकेट खेली है इन्होंने। हुज़ैफा दूसरी तरफ अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। टीम किसी हद तक संभली है, लेकिन वो जो कराची ब्लूज़ का एक बैटिंग ऑर्डर है, उनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है, उसको देखते हुए अभी तक नाकाफ़ी कोशिशें हैं। लाड़काना की ड्राइव के ऑफ साइड पर मिस फील्डिंग हुई। ये नाकस कारकर्दगी है मिड ऑफ पर खड़े हुए फील्डर की। ऐसा होना नहीं चाहिए था, जहाँ पर सिंगल होना चाहिए था वहाँ पर ये चौका लग गया, और इस तरह एतमाद हासिल हुआ होगा हुज़ैफा को। फुल ब्लडेड ड्राइव थी, मीट ऑफ द बैट, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद थे और गेंद उनके हाथ से, बल्कि उनके नीचे से होती हुई 4 रन के लिए बाहर चली गई। ये तवक्को नहीं की होगी रजा ने कि काफी बुरी फील्डिंग का मुजाहरा किया यहाँ पर। ये रुकना चाहिए था बॉल और एक स्कोर बनना था, लेकिन बॉल गया बाउंड्री लाइन के पार। तो खामियाजा उठाना पड़ता है जब हम मिस फील्ड करते हैं, तो स्पेशली बॉलर्स के लिए ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है। पैड पर लगी, अपील करते चले जा रहे हैं, लेकिन अहमद शहाब अपनी जगह से बाईं तरफ चले गए। गेंद लेग स्टंप पर जा रही थी और शायद अंपायर ने अभी तक लेग बाय नहीं दिया, इसका मतलब बैट का कोई हिस्सा भी गेंद को लगा है। हुज़ैफा 23 पर, जाहिद 16 पर। ये अच्छी पार्टनरशिप है, इसको मज़ीद आगे जाना होगा, और मगर ये 18वें 19 ओवर तक महदूद तक चलते हैं तो फिर एक माकूल टारगेट दे पाएंगे कराची ब्लूज़ को। ठीक है, सूरत पे कहना होगा कि मुकम्मल तौर पर कराची ब्लूज़ के बॉलर हावी हैं लाड़काना के बैटर्स पर। रजा चांडियो अच्छी गेंद, रफ्तार में रद्द बदल किया। ये खरबा होता है अंडर प्रेशर बॉलिंग का कि वो रफ्तार में रद्द बदल कर देते हैं जब अटैक हो रहा हो। ख़ासतौर पर हुज़ैफा और जाहिद क्योंकि खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में रजा चांडियो को हर हरबा इस्तेमाल करना होगा कदगन लगाने के सिलसिले में। Those are the two very seasoned umpire. Amarif, a former cricketer, now a long-serving scorer. He's from Babda. Beside him, Sajid Usman, a well-known figure. तो बड़ी ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है स्कोरिंग करना। छोटे छोटे लफ्ज़ होते हैं, हर गेंद के बाद ज़ाहिर है कुछ ना कुछ दर्ज करना होता है। अब ये अगरचे डॉट बॉल थी, लेकिन इसमें बैट्समैन के सामने लगाना होगा कि डॉट बॉल इसने गेंद खेला, फिर बॉलिंग फिगर्स में जाता है कि एक गेंद हो चुका है, तो स्कोरर हम वक्त मसरूफ़ रहते हैं। ये जहनी काम है और कहना होगा कि खून जिगर मांगता है। ये शौक भी है, ये प्रोफेशन भी है, एंड पीसीबी ने तो अब बड़ा अच्छा काम किया है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिए। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है। रजा चांडियो गेंद करेंगे, प्लेस ऑफ साइड पर। हाँ, नाना की आवाज़ वापस लौट गए हुज़ैफा। इस दौरान अब रन नहीं बना, 14 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। लाड़काना 105 विकेटों के नुकसान पर।
पैकेज प्रोडक्शन एक बाकायदा साइंस है, एक मैनेजमेंट है। ये बैट से गेंद लगी थी। सी काफी तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। आई थिंक फील्ड के दौरान शायद डाइव गलत लगी है, यहाँ कोई ऐसा मसल पुल काइंड ऑफ हो गया है, ये देखना होगा। तो काफी सीरियस मामला नजर आता हुआ हमें स्क्रीन्स के ऊपर। जिस तरह ऑब्जर्वेशन की जा रही है, चेक किया जा रहा है उन्हें, और जिस तरह रिएक्शन दे रहे हैं यहाँ पर, लग नहीं रहा कोई खैर की खबर है इनके लिए। यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या यहाँ पर। बॉल को पकड़ तो बड़े बेहतर अंदाज में लिया था, लेकिन उसके बाद पाँव मुड़ सा गया, वहाँ पर अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाए और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। लारकाना 101 5 विकेटों के नुकसान पर। मुज़ैफ़ा और जाहिद ने अच्छा इनिंग्स को बिल्डअप किया है, अच्छी शराकतदारी जारी है दोनों के माबैन, और कोशिश होगी कि इसको 1.5 से 2 ओवर मज़ीद बढ़ाया जाए और 16 या 17 ओवर में दोनों के पास मौका होगा कि स्लॉग हिटिंग करें, पावर हिटिंग करें। वे जिस डूबती सूरत हाल का सामना दरपेश था, उससे काफ़ी हद तक संभलने में तो अब तक कामयाबी मिली है लाड़काना की टीम को। ऐसा लग नहीं रहा था कि एक वक्त में यहाँ तक भी पहुँच पाएंगे, लेकिन जाहिद की जो तजुर्बाकारी है और हुज़ैफ़ा जो साथ दे रहे हैं उनका क्रीज के ऊपर, उनके बायस इस वक्त पार्टनरशिप तो बिल्डअप हो गई है, लेकिन हम देखते हैं इस पार्टनरशिप का अंजाम बेहतर होता है या क्या होता है। अच्छी पार्टनरशिप है ये। शायद कल डेरा मुराद जमाली का मैच जरूर देखा होगा इन्होंने कि जैसे पार्टनरशिप्स बना बना के अपना एक स्कोर खड़ा करना, बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस उनकी। तो ऐसी टीम यहाँ पे शायद गेंद नीचे जाएगा लेग स्टंप से। जी यही अंपायर का भी फैसला, फारूक अली खान अंपायर। अच्छी पार्टनरशिप इसको भी बिल्ड करते हुए 40 रन की पार्टनरशिप है, और कहीं अगर ये 150 155 तक अपने स्कोर को ले जाएं तो अच्छी फाइट हो सकती है। सिंगल्स को माइंड नहीं करेंगे कराची ब्लूज, क्योंकि सिंगल से ज्यादा स्कोर बढ़ेगा नहीं। पॉकेट डायनामाइट कहते हैं ताहा को। ये बहुत ही धुआंधार बैटर है, इनके कद पे मत जाइए, इनकी मासूमियत पे भी मत जाइए। खतरनाक प्लेयर हैं ये, अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर है, फील्डर भी अच्छे हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सॉकर स्किल्स दिखाते हुए नाखुश हैं ताहा, और सही नाखुश हैं। ये स्किल भारे पड़े हैं उनके ऊपर। जहाँ पर एक स्कोर बन रहा था आराम से फील्ड कर सकते थे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश की और न जाने कहाँ किक मार दी आरिश अली खान ने। एक बार फिर रिवर्स और कामयाब मिल गई।
जाहिद का एक और बाउंड्री, दूसरी मरतबा उन्होंने रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट की और दोनों मरतबा कामयाबी इनका मुकद्दर बरी। बाउंड्री के साथ एंड किया इस ओवर को। 15 के बाद लाड़काना 108 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। Yeah, that's a beautiful evening in Lahore. Winters refuse to go away. It's been that sort of a evening. Nice, chilly, great weather to play cricket. Last 5 overs of this inning. It's a good partnership. It's just building. You needed partnership, and they're providing. Captain Zaid Mahmood and Josefa. As I welcome alongside me, former captain Salman Butt. A very good and pleasant evening to you. Thank you, Ali. Likewise to yourself. Important stay at the pitch for Zahid and Josefa, as Josefa decides to come down, doesn't middle it. Another single to the total, but they have given some sort of respect to what was going on earlier. They had lost all 5 wickets very early and looked very off track. Now it's 109 for 5 with still 4.5 overs to go. 48 the number of runs this partnership has scored. Arish not among wickets, but it's been economical. 21, it's just 2 balls of his spell left. Zahid looks very old-fashioned, very angled bat, looking for those ones. Just have a look at him, yeah. So you get this familiarity with those players back in the 90s, just looking to angle, nudge one, just round the corner for a single. Oh, this is maybe there's an under edge. It's gone through the keeper and will get them boundary, a much needed one. So with this 4, they move to 114 at the end of 16 overs. So good to see so many new sponsors coming in at domestic level. It's been a while we have seen so many new people coming in and supporting domestic cricket. It's very heartening. Raza is back for his 3rd over. It's been very impressive. Zahid and Josefa putting pressure on the fielders, making them fumble. This is not good. From Karachi Blues, they're in a very good position, but this position can very quickly go away if Mohammad Afzal and his boys don't get active. Well, a couple of good overs here for the Larkana batters, and it could all turn around for Karachi, because remember they have to chase. Not many sides have been successful chasing. So far, just the one team successfully chasing a total down out of the games so far. And Karachi was the team who did it. But you don't want yourself to be in that position again and again. So still 3.4 overs remain. If
Huzaifa and Zahid can just add another maybe 35 runs, 35 to 40 runs, then we may have a good game. Yeah, that's good. That's better from Raza. In the block hole, they say, is always handy. Prevents you from being hit for a boundary. Around the wicket angle. This is good. Not many would be able to get that away. This is a delivery not seen a lot even in international cricket nowadays. Many bowlers in the death overs now stick to this into the pitch, slow ones, back of the hands, and there is the back of hand straight away. Ali, Yorker is actually one of those balls that takes a lot from a bowler. A lot of energy is required. So talk about 90s, Wasim Bhai, Waqar Bhai, your elder brother and legend of the game. Both of them were complete artists. They could make the ball talk at will. Those wonderful swinging Yorkers, that use of the old ball, and how they maintained one side of the ball and they looked after it. It was a proper craft. And this is edged. And this is over point. And there's always a gap over there. Most of the time if there's a point in the circle. So that will be a very handy boundary. 122 the total goes to. Still a ball remains in the 17th over. So talking about Yorkers, is lots and lots of overs bowled in their time. Even if they had an off time, they were still playing county cricket, playing 4-day cricket. And that craft just kept on getting polished and polished. And pitching outside leg. And once it pitches outside leg, there's no chance of leg before wicket. Zahid has something important to say even before he touches down in his crease. 17 bowled, it's 123 for 5. Oh no, they're leaking runs. This is not good from Karachi. Poor bowling. And Zahid Mahmood capitalizing on it. Had to just put the bat on it and get the boundary. So last few overs, Karachi has been all over the place. Misdirected, looking to bowl a Yorker. Ends up on a leg side and a full toss. It was put away by Zahid. Just had to get bat on ball. And the rest would be determined in terms of boundary. Now the fine leg drops back. The square leg comes in. Oh, this is the second time this very bowler, Fahad, has fallen. And this is a new pitch. Maybe something to do with his spikes, with the nails that he has. Maybe the length of the nails is not good enough. Because he's the only bowler who has slipped in this particular manner. Yeah, close look at the spikes. Thankfully that he's up and smiling. Oh yes, in fact, nothing to do with the nails because
his foot just, you know, it tilted, totally turned. The spikes never touched the ground. That is smacked. That is a shot and a half from Zahid Mahmood. His batting talent has always been hidden from us. Where has he been? His career best now, 40 of 23, and he can play shots like these. Wow. Zahid Mahmood, you little beauty. Nearly took the head off the bowler, who already has fallen once. Must be hurting in the leg, and now, thankfully for him, the ball just going over his head. And once again following him, and he flicks it this time. Lucky that there's a fielder on the boundary. He had this square leg up in the circle. This could have easily gone for another boundary. So they're doing well, this partnership. 41 to Zahid, Huzafa on 30. And already 9 of the first 3 balls of the 18th over. Yeah, 7.54 the current run rate. Another 20 runs from here, which are doable, quite easy. And we've got a game on. And there can be more chance. Hasan Ali, not to be. A quicker fielder maybe have gotten to it, but Hasan Ali not the fittest in the lot. Took a lot of time to get there. An opportunity given. It was in the air for a little while. Yeah, Hasan Ali was slow to get out of the blocks. Just have a look at him move. Just have a look at him. He is standing like he's standing in a catching position. He wasn't even taking a start, and he's got a lot of weight on him. He doesn't look fit at all. And poor bowler. He produced a chance, and then the fielder just not quick enough. Yeah, this is more out of frustration. Bending his back. And Zahid looking for a wide, but the umpire says, no, sir, you have to settle for just one of the over. Yeah, that's a good one. That tennis ball bounce in this surface. We've been talking about this new ball which has been introduced by PCB in this tournament. It flies, it runs, goes away very quickly from you. And on top, there are pitches which are supporting the bowlers who can extract the bounce. That's nicely placed and timed, but just for one. Zahid Mahmood continues to score runs. 18 done, 134 for 5. Raza Chandiuk. And for the last over for him, and the second last for the inning, 134 for 5, 73-run partnership. Would you believe it? Full toss. Pull towards onside, just one run. Keep your eyes on the umpire, but probably no, he's not interested. He's happy with the height of the ball. Yes, that's what he's inquiring with the leg umpire.
just checking upon whether the height was good enough to call a no ball or whether he should just let it go. And this will, oh, definitely. Well, naked eye is good enough to know this. It's so evident. This has to be a no ball and a free hit. Yeah, it keeps getting worse for Karachi Blues. Very indisciplined. Bowling has been wavered in last few overs. And now this, it's definitely above waist high. It's dipping, yes, but not quite enough. This is the impact, the point of impact that the umpire has to see. Tariq Rashid, the third umpire, not the first time that is supposed to make a difficult decision. Should be a no ball. Still waiting for the official decision. Yes, no ball given by the umpire and right decision made. Yeah, just not a no ball, but a free hit to follow. And that too for Zahid. It's Josefa to face, I beg your pardon. Yeah, the idea was maybe right because he was bowling that offside-ish line and having the fielder inside the circle. Ghazi Gauri on the other end is being very desperate to break the partnership. Yeah, showing decent awareness. First taking the bails off with the throw and then coming with the ball and plucking out the stump. Showing that he knows what to do if you're going to attempt a run out after the bails have fallen. Azigori has played quite a bit of cricket for Pakistan Shaheens now. He's toured a number of times. And this season he's batted well as well. He's among the runs in the trophy, President's Trophy. He's probably the best batsman, player of the tournament, to be exact. And finally, the wicket is there. A Yorker in front of the stumps. Once again, Josefa attempting a paddle shot and not making any contact with the bat. In the end, adjudged leg before wicket. Larkana lose their sixth at 136. Yeah, no position. The head was way outside of stump and the ball was within the stumps. So just not in line, but a decent fight. Decent effort from him, putting up a partnership, taking his team to a total which still can be fought with. 136 for 6. Fast bowler, Mushtaq Khaloro. Karachi Blues have been able to break the partnership, which was up to 75 runs. That has put a life in this game, that partnership. Because at one point we all thought that Larkana might not get to 100, but that partnership was just magnificent. Nice one. They were 61 for 5, Salman, at one point, and from there to get to 136, still 9 deliveries to go. They've done a good job, you can say. It has to be said, good fight put on by these two, the number 6 and 7 batter, and they got in a position where they could still put on 15 from here, take the team across 150 and maybe make a match of it. They have Dhani in their ranks. They have Zaid Mahmood. So 2 international bowlers. And Mushtaq Khaloro, a decent first-class bowler. Oh, this one is edged and will go to the third. And just the one for the batters.
Zahid is the one who has hit a few boundaries in the last few overs. And now his team would want that he can keep repeating his show, hitting boundaries till the overs end. Maybe if he can get 2 or 3 boundaries in the remaining 8 deliveries, would make it easier for them to cross the 150 mark. Yeah, he's trying his level best. But Raza has been very smart with that angle that he's bowling. He's bowling outside the off stump, taking the ball away from the right-hander, which is making it tough for Zahid Mahmood, who's looking for that car corner. And he's got lots of protection on the offside. He's got a deep point and deep cover in place. So a bit of a comeback from Karachi Blues in this over. It's 4 runs given so far, which you consider very good in the 19th over. Third is inside the circle, final leg inside the circle, square leg inside the circle. Zahid Mahmood swings, misses. He's disappointed, rightly so. But Raza on the other hand has done a good job in finishing off this over. 137 for 6 after 19. Right, last 6 deliveries. Colorado to face. He smacks one, but just for one. But that's good. That Zahid Mahmood is back on strike. If there is any chance of a big hit, it's Zahid Mahmood who's on 43 of 29. Captain 7 short of a very valuable 50 for his team. And he'd love any runs that he can get. He's already on his career best. And what a time in his career to make the first 50 and maybe get one more wicket to get to the 100 mark. He's on 99 not out in terms of wickets. And maybe it's a double milestone achiever for him. Who knows? Still 5 balls. And to top it off, maybe win the game for his team and beat Karachi. Icing on the cake. 1 game and 3 achievements. But 1 at a time. Still 7 required for the 50. Then a wicket for 100. Oh, this is smashed in the gap. Should be easy couple. Should be easy couple. Mushtaq Kolro is in no mood of giving the strike back. Zahid unhappy. And now he's going to come all the way to settle down the matter which has arisen. Yeah, Zahid still not happy. And rightly so. There was 2 available. Clear 2 available. It was hit in the gap. This is the last over. There is no point in saving the wicket, Mr. Mushtaq Kolro. You need to come back. Zahid Mahmood is the one who has to face. Oh, now we see it. Now we see the reason why he wanted the strike. Because he's put one into the stands. That's brilliant. I take my word back, Mr. Mushtaq Kolro. You are the man for the job. Too fast, too furious. Ali, you were jumping the gun. And here it is, the man, Mushtaq Kolro. He's scored a 50 here in one of the first-class games. And to score a 50 in a first-class game, you need to have a decent idea of how to operate with the bat. And he's done a Steve Smith here. Go back. I'll hit big. A little bit of delay because the ball just went
that vacant space that we have between the ground and the stands. A bit of a worry surely for Karachi Blues. 146. It will be a bit of worry when they come out to chase that total. It was the same sort of number that they chased in the previous game, but that also after some difficulties in the last over. Yep, he was the one who scored a 50, a match-winning knock. Usman Rahim was the player of the match in that game, and by the look of it, Salman, it seems like that he will have to do it one more time. Sometimes it's being very close to a milestone and still not getting there. Still 3 balls. Zahid not on strike. Mushtaq is there, but this is also a big one. Another big hit. Half a dozen more to the total. It's raining 6s. Mushtaq Kolro is striking big. No ball being checked. And Zahid not very impressed. Respect for Mr. Mushtaq Kolro, because he's earned it. He snatched it. No worries at this end. It's the height that the umpire needs to look at. Goes deep in the crease. It's dipping, but the point of contact maybe. Third umpire again in action. Yeah, this surely does seem to be above waist height. Yes, it is coming down, but the point of contact with the bat and ball is definitely above the waist. So that should be the valid enough reason to call it another no ball. And it is going to be called a no ball, yes. And there is the signal for you. So this is proving to be a terrible, terrible last over by Karachi. Already with their 6, they've gone to 153. It was a no ball and a 6, giving them 7 runs. So 13 of the last 2 balls, still half the over to be bowled. 16 runs of the first 3 balls. This is how costly this over has been and could be possibly the difference in the game. Oh, this time he just hits the rocket back at the bowler. But Zahid, why have you run back? First you were looking to strike and now there is no run to be had. So he's run out Mushtaq Kolro. I don't know what to say, Ali Bhai. Please carry on. Excitement to get Mushtaq back on strike, because he was the one who struck 2 6s in the over. So maybe he was thinking that let's give him the strike. He has more chance. He's hitting those clean 6s. He's out by some distance, some miles rather. So there was no opportunity for him to make a comeback, because it was hit straight to the fielder. Mushtaq Kolro has played a cameo, no doubt about that. 15 runs is given the momentum to the team of just 16 deliveries, 154 for 7. Yeah, he's not happy. The captain, because he was not happy in the previous game also. He will even more be unhappier, because it's just not a wide, it's a no ball. Boy, oh boy, what's going on? What's wrong with the Karachi? This is a no ball, which not many people know.
if the bowler delivers a ball which pitches on the side pitch, then it's another no ball. So it's a display of the variety of no balls that we have been seeing. Just see that, that white line, that last white line on the pitch that you can see, if the ball falls outside that line, it has to be called a no ball. So Zaid now has a chance to get to this first 50. He strikes one, but this goes straight to the fielder and oh, more drama. The batter runs in between. The umpire now has to decide whether he did it intentionally or was he the innocent party. Yeah, it's very hard to tell because he had to come back. And the throw was coming surely at that end. Really can't say if it's on purpose. Just an accident maybe just came in the way. You cannot doubt the intentions of the player. But it's the umpire who has to make the decision. Still pending. This is what happened. He smacked one straight, went one bounce to the fielder. Zaid Mahmood was very casual until he decided that he wants to come back. You cannot say that it's intentional. No, I don't think so, Salman. No, he was taking evasive action. His eye wasn't even on the ball. And he just responded to his captain's call. And I absolutely see no intention. And the umpire will definitely see the likewise. Yeah, not out. It had to be. In fact, the poor guy got hit responding to the captain's call, who, for some reason, took ages to call him back. So 46 for Zaid. He needs the boundary. It's the last ball. Could be his first and a very dramatic 50. It is well bowled. And overthrows. Yeah, definitely. So he'll get to 48. Larkana will get to 160. A competitive total on the board. The captain playing his career best 48 of 32. A very valuable hand. And taking his team to a total where they will regroup and say, yes, we can fight. And maybe we can pull off a good game, a win. Yeah, this is what happened. The captain was shouting, there is no need to throw. No need to give them an extra run. He was not happy with that throw. He already had an horrible over, the last one. And on top of that, just gave away an extra run, the very last delivery. But nothing taking away from the brilliance of the captain, Zaid Mahmood. At one stage, this team was done and dusted. And then there was a partnership. He was the main man in that partnership, scoring 47 runs. Stayed not out till the end and gave himself and the team a sure shot to defend this one. You can tell the worried faces, they're not happy, Karachi Blues, because they shouldn't have let them get to this point where Larkana can surely challenge them. Few early wickets will definitely put them under a lot of pressure. Yeah, this is how it all began. And this was the first ball skied up and taken by the fielder, first wicket to fall. And this one was an awkward ball, a top edge that went for 6. And it was Malhar striking the ball. And he was sighting the ball better. He scored a 50 in the previous game. And he looked good in this game. And then around him were some very, very soft dismissals, shots that the batters would think, why were they playing this? And the spinner, Wahaj, came in. He picked up wickets, dented the middle order, and then started that bit of a fight, that partnership of Huzaifa and Zahid, where they both played the overs and also got some runs and gave a decent platform to their team. In the end, getting to a total which is quite competitive, knowing the fact that they lost a lot of early wickets. 160 they got, and it's a 161 to get for Karachi. They were 61 for 5 at one point, and then came that partnership between Huzaifa and Zahid, 31 and 48 for the captain.
And before that, it was Malhar, the man in form for Larkana region, scoring one more good inning. 41 of 25 deliveries, 15 runs, a little cameo from Mushtaq. Hit a couple of big sixes in that, the second last over. In fact, the last over, and got the total to 160 in their 20 overs. 3 wickets for 14. This is the pick of the bowlers. Wahaj was brilliant. The economy also 4.67, very controlled. A wicket each for Fahad, Maz and Raza. But overall, as a bowling unit, they will be disappointed, because from 61 for 5 to 167 probably is not an effort that the captain would like it from Karachi Blues. Right time to head down to Mirab, who's got an interview lined up for you. This is ABS Developers T20 Qualifiers and I have Wahaj Riaz with me who've just taken 3 wickets. तो इनसे बात करते हैं. Wahaj, 3 wickets and मतलब बहुत अच्छे overs आपने करवाए हैं. कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है, और जो प्लान था कप्तान का और कोच का, मैंने उस प्लान पे बॉलिंग करी और मुझे कामयाबी मिली उस पर. लास्ट ओवर बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया समवेयर के, मतलब वो रन्स भी कंसीड हो गए और उसमें मतलब काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग थी. क्या लग रहा था उस वक्त में? ऐसे ये थोड़ा सा हो जाता है, ड्यू फैक्टर है, और रन्स अच्छे हैं हम लोग इंशाल्लाह. बैटिंग अच्छी है हमारी, हम चेस करेंगे इंशाल्लाह. बैटिंग में ज़्यादा होप किसके साथ है? बैटिंग होप हमारा टॉप ऑर्डर अच्छा है इंशाल्लाह. उस पर अगर स्टार्ट हमें अच्छा मिलता है तो हम चेस कर जाएंगे इंशाल्लाह ये रन. लेकिन ये है कि अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कुछ मैचेस में, तो उसमें हमने देखा है कि चेज इतना इजी नहीं, मतलब होता भी नहीं है समटाइम्स. तो आपको लग रहा है कि थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है? डिफिकल्टी होगी थोड़ी सी, लेकिन हमारी बैटिंग अच्छी है इंशाल्लाह. रन इतने नहीं है, पिच अच्छा है, और पिच के हिसाब से अगर रन देखें तो हम डिफेंड कर देंगे इंशाल्लाह, रन चेस कर जाएंगे. चलें, परफेक्ट. ऑल द बेस्ट. विद दैट, ओवर टू द कॉम बॉक्स. The only thing that goes in the favor of Karachi Blues, that the only time a team has chased down a total this year in this year's T20 is Karachi Blues. They chased down 147, but they will have to do 161 runs to win at 8.05 runs per over. That's coming your way after a short break.
A beautiful evening here in Lahore as we get up for the run chase in the 5th match of ABS Developers National T20 Qualifiers. The two umpires heading up. It's Ahmed Shahab on the right and Farooq Ali Khan on the left. The two very good umpires from PCB panel. And the situation at the moment is that Karachi Blues, they would be touch disappointed with the effort they've put in, especially in the last 7 to 8 overs. They were very wayward in the field with the bowling. They were not up to the mark. They gave away a lot of runs. But the thing that goes in the favor is that the only team who has chased down any total in this year's tournament has been this side. They chased down 147 in the first game, but they'll have to better that because they now need 161 runs to win at 8.05 runs per over. And if these two giants, if they get going, both of them very talented, hard hitters, hit them big, hit them long, then this required run rate will not be a problem. But can they cop up with the pressure? Can they pop up with that extra bounce that bowlers are extracting out of the surface? And the ball doing a little bit, seaming around. So they'll have to answer that questions that bowler will ask them. Larkana on the other end, they've got pretty decent fast bowlers. Shahnawaz Dhani and Mushtaq Khulorod, both very good fast bowlers who would like the extra bounce on the surface. A lot will depend on Janzeb. Janzeb Sultan played one game in the last year's HPL PSL and he's been picked again. With him is Ehsan Ali. He's been a good performer for Karachi for over the years, experienced campaigner. But they're up against Mushtaq Koloro rather. Thank you, Salman, but just correcting me with the name and the pronunciation. And now it will be up to the bowler, Salman, because the batters have done their part. Well, yes, the bowlers did the batting part. Now they have to do their own part, which is the bowling, and to restrict Karachi under 160 that they have put on the board from opposition. Yeah, indeed, it's now the turn of the bowlers to do it with the ball in hand because they were the ones who did it with the bat in hand. And 160 they have to defend. They want to keep Karachi behind this score in order to put up a score, winning points onto the table. Once again, a foolish ball and casually played away from the body. Lucky that the edge didn't carry. Once again, the slip fielder seems to be very deep. Yeah, that's been the case. They've just not identified where exactly to be standing because we can get some extra bounce, extra zip. But this time, Janze playing it with soft hands. That's why it didn't just carry to the slip field. Have a look at this. Just a very tentative without any feet movement, just all hands. That's what we know of him. They're off to one. The target is 161 for them. Ehsan Ali to face his first delivery. Nice use of the wrist. We've been talking about it, that if these two get going, the required run rate will not be an issue because both these batters, they're hard hitters. They can hit them long and they can hit them for a lot of time. Jazee played a blinder of an inning in the previous edition that happened in Faisalabad. There will be nerves, some jitters in Karachi camp, Salman? Well, there shouldn't be. They're an experienced team, and Hassan has played a lot of cricket. Janzeb Sultan, he's played PSL. He looked great in the last National T20, but here, this time around, in this ABS National T20 Qualifiers, he's very static. There are no feet in his strokes. He doesn't go and cover the line of the ball on the back foot. Doesn't hop onto the front foot to play a stroke. You see that? Feet stuck in the crease, just the bat and the hands going. And that is where the batting looks very untidy.
This time steps out, use of the feet down the ground, and wanted to hit the ball over but didn't get the length, so blocked it. Yeah, that's what we have seen so far from Janzeb. He's not a big fan of using his feet, all hands. But he's got great hand-eye coordination once he gets going. We saw that in Faisalabad, as just mentioned. Careful. Janzeb Sultan was present at the pre-match show that happened today, before the match. And I did ask him that what's the different that he needs to do in this game to score runs. And he was of this opinion that the coach Saeed bin Nasir has talked to him that he needs to stay there on a surface like that to be successful. So probably that's the plan in this inning. Yeah, he needs to stay there, and then he needs to keep moving in the crease. He needs to cover the line of the ball, get close to it while driving, get behind it while punching or cutting. At the moment, very static. Yeah, this is not the kind of movement we are talking about. This is more out of frustration of not being able to get it into the middle of the bat. First over gone, and Karachi 2 for none. Shahnawaz Dani. If ever a team needs a performance from him, it's this now. Because they can sniff that they can win this one. 161 the target. 48 runs he gave Salman in the previous game, but they need better out of him in this game. Especially with all those eyes on him after being picked for Peshawar Zalmi in HPL PSL, because they will be having an eye on him, his performance, his rhythm, especially in the white ball format. That's why he needs to bring his A game here. Right, he's up and away. Good run. Well done. Both giants doing well. Yeah, good to see them hustling for a one. Played with soft hands, Ahsan Ali, and gets off strike, brings back Janzeb Sultan to face Dhani. Just have a look at this, quickly out of the blocks. Both very similar in structure. Ahsan Ali just the more experienced one. Janzeb touch taller than him. But the intent pretty clear. They're very strong. Beautiful, beautiful delivery. Very good. This is where he needs to be. That's the channel. Yeah, right length and ball seaming away. And once again, Janzeb Sultan just can't move in the crease. All right, it was a good ball, but he had both feet stuck in the same place and squaring up. This is edged, but well taken by the fielder at slip of the bounce. It was the bottom edge of the bat. Malhar, the fielder in the slips. So Janzeb is just planting his front foot, opening the toe, and then just having a go from there. There is no position to play a cricket stroke. Yeah, he's just not been able to find the gap at the moment. Not been able to time it even. But that's all right. He must not get worried about it, because we all know what he's capable of, what Ahsan Ali is capable of.
They can always take the time. A few deliveries, if they play dot, that's not a problem. They can always catch up with that strike rate. He should be over the moon at the moment, Zahid Mahmood, with the batting performance that he did. Down the track again, wave it, not good. Purposeless. Because he's faced now 10 deliveries for just 1 run. At the moment, it's just swing and hope. It's just swing and hope that somehow the ball hits the bat. This is not looking good from Jazeb. 9 balls, 1 run, and 2 of 2. Karachi 3 for no loss, and it's just a ball to go in the second over. Yeah, it's in the air, but fielder might not be able to get there. So not the confident of the ways, but he will get that boundary, Janze. Maybe that will bring back the confidence for him. 2 overs done, 7 for none. Mushtaq. Chloro. Aha, that's nice. That's brilliant. That's Hassan Ali for you. How many times we have seen him play that shot straight down the ground for 4. This particular length is asking for trouble, especially bowling up and full to Hassan Ali. He is somebody who just waits for the ball to be in the slot, and then he really hits it hard. He backs a punch while he hits the ball. Just have a look at this. Strong arms. Yeah, he scored a 300 in this very ground. So that's a happy hunting ground for him. There'll only be one. Yeah, we were here commentating in that game, and he scored a 300 in one of the Quaid-e-Azam Trophies game. That was a good inning. Well, what happened, Salman? I want to take your take. We have been talking about it. Something happened in the previous inning rather. Zahid Mahmood just struck one towards onside. They had no intention to come back for the second. Now he decides. The striker and batter, he decides to come back. He was not even looking at the ball. It hit his arm. The bowling side did appeal for it. Yes, this is called obstructing the field. If it's given out, that is the description of out. That he's obstructed the field on intentional basis. But no evidence of that was found when the umpires checked it. In fact, his face was on the other side, and he was just responding to his captain's call of 2, which was pretty late. So the poor guy got hit on the arm, and then he was checked for whether he did it on purpose or not. And in the end, the umpire found out that he had nothing to do with it. So all's well that ends well. But for any young children watching, this sort of out appeal is for obstructing the field. Sensational. He's appealing for it. He's appealing for it. And he's given it. He has given it. Umpire Farooq Ali Khan had no hesitation in giving him out. Jazeb on the other end. He looks stunned. He looks shocked by this decision. He had no clue about it. No worries at this end. It's the other end. Came in with the angle. Gave himself room. Oh no, I'm not sure if he's nicked it. No wonder he was shocked. He still is disappointed. But there is nothing he can do now.
just have to walk back, scoring 5 runs. It's 12 for 1. Right, Mohammad Taha is very talented. He's a bit of a pocket dynamite if he gets going. Because he's got lots of shots, he's got lots of variations, and he's very courageous also. Just don't go on his height or the innocence he has on his face. He can hit them big. He's a proper timer of the ball. But Farooq Ali Khan has given Janzeb caught behind. Yeah, that's the confidence I'm referring to when I see Taha play right behind the line from the middle of the bat. Salman, your thoughts on this? Very disappointed the batter would be, in this case, Janzeb Sultan. And he was clearly beaten. And just have a look at him get that initial shock of looking at the umpire, giving that decision in the favor of the bowler. Well, the umpires only have one chance. At times, they can be on the wrong side. But that's learning as well for the batters not to react. But obviously when it comes, sometimes it comes as a shock. But then there are other times when you're actually out and the umpire thinks otherwise. 3 bowled, 13 for 1. Nice, brilliant, fabulous. Shahnawaz Dhani, if he gets it right. It's very important that he gets it right for Larkana's side. Yeah, very important that the senior pro gets it right for the sake of his side, for their chances. And if he picks up a wicket or two in this power play for his team, that would be a great start and a boost for the remaining bowlers, and also problems for the Karachi side. This is a good length, but well played by Taha. Gets off the mark. He's in fact gets off strike. Was off the mark previously. Yeah, this is match number 5. We're into the 3rd day of ABS Developers National T20 Qualifiers. Remember, there are 2 pools, 5 teams each, and 1 team from both the pools will go and play the Super 8s. That happens in Peshawar, starts from 5th of the next month. And then there will be HBL PSL after that. So lots of opportunities for the boys to perform. Get your place in HBL PSL. You still can make it there. But for that to happen, you need to come here and perform. That's simple. Don't make it tough for yourself. Platform from PCB has been provided. It's been telecasted. It's been watched all over the world. Anybody who performs will surely be in contention, because the headhunters from all these franchises, they're always searching for some talent
performers. So you just cannot hide. Your performance will never hide now. If you're a performer, if you're good enough, you will be picked. Nice punch, but didn't quite find the gap. If Hassan Ali has to do it, he has to do it with the boundaries. That's the kind of player he is. And not now, it's always been the case with him. Taha is somebody who can hit strokes, hit the big ball, and also run well between the wickets. At the moment, they have to contend with the new ball from Dhani, who's bowled well today. He's looked better than what he was in the previous game. 6 runs he's given away, 1.4 overs bowled. Just 14 at the moment into the 4th over Karachi. Already they've lost a wicket. Just wants to pluck any daylight out of the ball. Wants to hit it so hard. And when he does want to do that, he loses shape. Yeah, even yesterday, Shajil Khan struggled, and at the presentation after that, I had a word with him. He said it's not sort of a surface where you can hit it hard. You need to be timing the ball rather than looking to hit it hard. And if you're able to time it properly, you will be rewarded. That's sharp, that's brilliant. That's a snotter from Shahnawaz Dhani. Good pace also. 4 gone, 14 for 1. This is good. Is given the 3rd over to Mushtaq. Oh, was there an opportunity? Was there an opportunity? And an opportunity on the other end too. Hassan Ali was almost touching Taha on the other end, then had to come back. Seems as if this is a double miss. Firstly, the keeper has missed on an opportunity to catch the ball. And then the throw didn't hit directly on the other end where Hassan Ali was struggling. And just have a look at this fancy paddle. No, in fact, nothing on the ball from the batter. But on the other end, certainly if this throw had hit directly, would have been curtains for Hassan Ali. So, nerves in the Karachi camp at the moment. Oh, well, this is struck and struck big. Over mid-on, and this goes the distance. 6 runs. It's really hit the screws in the middle. And Taha shows his talent, glimpses of it. 20 Karachi Blues get to with a 6 hit from Taha. Cold Road doesn't have the pace to bowl this length. He has to be very precise with his line and length, and in fact look for any early swing that there is available. Yeah, that was a brilliant hit from the youngster. He's very courageous. That's what I like about him. He's a brave player. I've seen him play some quality innings in Champions Cup, cameos. So he's somebody that you need to have your eye on. Pretty much sure it won't be long that headhunters of HBL PSL franchises, they'll have an eye on him. He's surely one for the future in this format. He can bowl also, left arm spinner. And he can play shots like that, hammered down the ground for 4. This boy is pure magic. Wonderful hit. This over quite expensive from Mushtaq.
He's banged it in, a slower one, picked up and smashed down the ground from Taha. Just love his approach, love his intent and the skill he possesses. And certainly that good start is now becoming an average start from Larkana. It can all happen in 1 or 2 overs. That's a good comeback. Few words also. But it's all good, all smiles. It's fantastic to see the ball carrying to the keeper at such a good height, and also a bit of movement. Some even contest between bat and ball. We've saw some good hits in this over on the previous deliveries, and now we've seen a Jaffa angled in and just holds the line after pitching. And this is the scoring party, both wearing lovely black jackets, showing you that the winter comes back in the night. 5 overs completed. Karachi Blues 24 for 1 as we hand over the mics to Mr. Raja Asad. कराची ब्लूज 24 सकलैन के हाथ में गेंद है। सकलैन नवाज ऑफ साइड ऑन साइड पर फील्ड देख सकते हैं आप। पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर ऑफ टॉप बैट्समैन के बिल्कुल सामने है। ऑन साइड पे शॉट फाइन लेग मिड विकेट ऑफ डाउन सर्कल के अंदर है। एक फील्डर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर है। सकलैन लंबे कद के हैं। ये टाइम तो नहीं किया लेकिन उस सब में खेले हैं जहाँ पे रन्स बन सकते हैं। एक बनाया, फील्डर गेंद के पीछे आए और बैट्समैन सरपट दौड़ते रहे। 2 रन्स का इजाफा हो गया है। ये भी आपने जिक्र ही किया था कि मिड ऑफ मिड ऑन सर्कल के अंदर है, शायद ये बात वहाँ तक पहुँच गई और उसी जगह पे आप देखें कि हिट मारा, दोनों के दरमियान से बॉल गया, 2 स्कोर का ओवर इजाफा हुआ। स्कोर को चलाते रहना होगा ताकि मुश्किलात बढ़ती ना चली जाएं कराची के लिए। कराची के क्रिकेटर्स T20 के कल्चर से पुराने वाकिफ़ हैं। हम जानते हैं कि कराची में जो रमज़ान क्रिकेट है उसमें जो प्राइवेट क्लब्स हैं वो मसरूफ़ हो जाती थी और एक हंगामा होता है कराची में रमज़ान के दौरान। बहरहाल अब PCB जो है उसने मरकज़ी सतह पर जो T20 क्रिकेट है उसकी दाग बेल डाली और अब कहना होगा कि इस इवेंट की एक शो पीस हैसियत है हमारी कौमी क्रिकेट में। ताहा 12 पर, एहसन 10 पर। 161 कोई बहुत चैलेंजिंग टारगेट नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि लाड़काना ने अच्छी बैटिंग की, एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। सौरान सकलैन संभल कर सीधे बल्ले के साथ ऑफ साइड पर एक क्लस्टर है फील्डर का। पॉइंट कवर ऑफ मिड ऑफ। इनको बाइसेक्ट करना आसान है तरह के लिए। बल्ले को रोक कर खेलें, स्ट्राइक को रोटेट करते चले जाएं। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्राइक रेट दरकार नहीं है। ये जैसे चेक किया स्ट्रोक को, आगे चले गए थे। पिछले कदम पर ज़्यादा वक्त मिल जाता है बैटर को और वो ज़्यादा जोरदार स्ट्रोक लगाते हैं। सब भी बेहतर इख्तियार करते हैं। फ्रंट फुट पर कमिट हो चुके थे ताहा। ये एक एग्रेशन था जिसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई ताहा को। सकलैन ने अभी तक टाइट लाइन और लेंथ से गेंदें की हैं। जोर कम लगाया है, लाइन पर भी ध्यान दिया है, लेंथ पर भी ध्यान दिया है।
यह इरादा भांप लिया था सकलैन ने, क्योंकि एक इससे पहला डॉट बॉल आया, लेकिन उसके बाद डाउन द ट्रैक आए, लेकिन महारत का इस्तेमाल किया सकलैन ने। अच्छा मोड़ा है स्क्वायर लेग की तरफ और गेंद जाएगी 4 रन के लिए बाहर। ये टिपिकल क्रॉस बैट शॉट है जो T20 में बड़ी मकबूल है। सकलैन ने थोड़ा गेंद को शॉट किया, गेंद अंदर आ रही थी, शॉट देखते हुए इसको स्वीप करने के अंदाज में हाफ पुल हाफ स्वीप थी और गेंद पलक झपकते ही 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानिब। ये कोई अच्छी लाइन भी नहीं थी लेफ्ट हैंडर बैटर को बॉल करने के लिए। बिलखसूस तलहा एक स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर हैं, इनके मिजाज में जारहानापन है और यही वजह है कि बॉडी लाइन पे बॉल मिली, उठा के मारा स्क्वायर लेग की जानिब 4 रन के लिए। सकलैन अगली गेंद का सामना करेंगे, अगली गेंद करेंगे, अपील करते चले जा रहे हैं लेकिन नहीं, अंपायर बगौर देख रहे थे और हरके अहमद शहाब का एक तजर्बा है, वो जानते हैं समझते हैं कि सूरत हाल क्या है, तकाजे क्या है। तो इस तरह 6 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ, पावर प्ले खत्म हुआ 31 पर 1 कराची ब्लूज। फारूक अली खान ने सिग्नल दिया है कि पावर प्ले का जो खेल का हिस्सा है 6 ओवर्स का वो ख़त्म हो चुका है। तो अब जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन है वो उसमें रिलैक्सेशन होगी फॉर द फील्डिंग साइड। ये वो मनाजर हैं जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पिच के वक्त में जो पिच स्टेबल है वो ऊंची होती है। जाहिद महमूद बॉलिंग करने के लिए आए हैं, ये रेस्ट स्पिनर हैं और सही वक्त पर उन्होंने अपने आप को मुतारिफ करवाया है। ऊंचा शॉट ऑन साइड पर और गेंद काफी देर तक हवा में रहने के बाद हमारे बिल्कुल सामने साइड स्क्रीन के सामने 6 रन के लिए बाहर जा चुकी है। बड़ा अच्छा पावरफुल स्ट्रोक था ये बैटर का, बड़ा अच्छा फॉलो थ्रू भी एहसन का। तो इस तरह जाहिद का आगाज कोई अच्छा नहीं है, पहली गेंद पर जबरदस्त सीधा छक्का लगाया है। खुशामदीद कहा जाहिद को एक बड़े शॉट के साथ। मैं समझता हूं कि ऐसा बेहतरीन वेलकम नहीं किया जा सकता। तो अब थोड़ा सा जो मिजाज में जो जारहाना मिजाज है उसे अपनाना होगा बैटर्स को। 161 रन है जिसका ताकुब कर रही है कराची और जीत का तसलसल जो है उसे जारी रखना होगा। 78 मैचेस में 99 विकेट्स ली है जाहिद महमूद ने, तो बड़ा ही तजर्बा है इनका T20 के हवाले से। एक लैंडमार्क मैच इनके लिए होगा अगर ये एक विकेट हासिल करते हैं। 100 विकेट T20 क्रिकेट में हासिल करना काफ़ी एक बड़ा कारनामा होता है किसी भी बॉलर के लिए जो बैटिंग अच्छी कर लेता हो। जाहिद सरकर्दा क्रिकेटर रहे हैं पाकिस्तान की कौमी इंटरनेशनल क्रिकेट में, 39 पर 1 और जाहिद ज़ाहिर है कि ये स्पिनर है जिनके लिए हमा वक्त विकेट पर जान मौजूद होती है, विकेट के लिए मौके मौजूद होते हैं। सोचते रहते हैं काफ़ी देर से ये कौमी फक पर क्रिकेट खेल रहे हैं। बेहतर गेंद, दिफाई स्ट्रोक। अब ऐसी बॉलिंग पर ज़ाहिर है कि सिंगल भी लेते रहना चाहिए, जबकि पहली गेंद पर छक्का लग चुका है। ये पावर प्ले की हाइलाइट्स हैं, किस तरीके से जो सहूलत हासिल थी बैटर की उसका पूरा फ़ायदा उठाया, उसकी कोशिश की, शानदार पेशरफ्त थी। ये ऑफ ड्राइव बल्कि ऑन ड्राइव बीट हो गए बैटर, जनाटेदार ऑन साइड पर ये स्ट्रोक खेला था। ये एक और इन फ्रंट ऑफ द विकेट ऑन स्लॉट। तो ये वो झलकियाँ थी जो कि पावर प्ले के दौरान क्रिकेट की सरगर्मी के हवाले से थी, बैटिंग की सरगर्मी के हवाले से थी, बॉलिंग की परफॉर्मेंस के हवाले से थी। इस गेंद को ड्राइव के ऑफ साइड पर ताहा और एहसन बज़ाहिर कॉन्फिडेंट हैं। वलीद याकूब को आपने देखा, ये भी फर्स्ट क्लास अंपायर हैं। ड्राइव सीधा कवर्स में अच्छी नैगिंग लाइन और लेंथ से गेंद की थी जाहिद ने।
इस तरह 7वां ओवर खत्म हुआ, 41 पर 1 कराची ब्लूज। सकलैन के हाथ में गेंद है। 120 रन का अभी भी शगाफ है कराची ब्लूज के लिए। 161 रन बनाए थे लाड़काना ने पहले बैटिंग करते हुए। अच्छी विकेट है, अच्छा इवन स्टीवन बाउंस है, रन मौजूद हैं। एप्लीकेशन की ज़रूरत है, विकेट पर खड़ा रहने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में ताहा और एहसन इस सूरत हाल को अच्छे तरीके से समझते हैं। 161 एक फाइटिंग स्कोर है फॉर लाड़काना। कराची ब्लूज की तगड़ी टीम है, इनके पास अच्छे बैटर हैं और T20 क्रिकेट का एक्सपीरियंस भी है। मौसम बीच में जो टच ऑफ विंटर है उसका तो एहसास होता है, लेकिन मजमूई तौर पर इंतहाई खुशगवार मौसम है। तेज़ रोशनियां हैं, विकेट बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए साजगार है और ये दिलपसंद और मकबूल आम क्रिकेट है T20 क्रिकेट। और ये जो इवेंट है ये ABS डेवलपर्स नेशनल T20 क्वालिफायर 2025-2026 है। जोरदार ड्राइव ऑफ साइड पर, बड़ा उम्दा स्ट्रोक है। इंतजार में थे एहसन और इस गेंद को पहुंचा दिया उस जगह पर जहां पर ये गेंद जाने की मुस्तहिक थी। सकलैन ने ये तोहफा दिया और T20 क्रिकेट में जब टॉप फील्डर आगे हो तो उसको सिर्फ बाइसेक्ट करना होता है, बाकी काम जो है वो गेंद की रफ्तार करती है। यह जोरदार अटैक था एहसान अली का, मिड ऑफ और शॉर्ट कवर के फील्डर के दरमियान से बाइसेक्ट किया 4 रन के लिए। और अब वक्तन वक्तन इस तरह के स्ट्रोक्स दरकार होंगे क्योंकि जो दरकार औसत है वो ऑलरेडी जो है वो 9 रन को टच करती हुई। ये करीबी मामला था, कल में जोरदार हिट लगाने की कोशिश में थोड़ा चूक गए, कवर्स में खड़े हुए फील्डर के पास गेंद गई। एक चीज मैंने महसूस की है कि गिरते ही अपने टांगों को हाथों को सहलाना शुरू कर देते हैं क्रिकेटर। ये चीज ज़ाहिर इनके प्रोफेशन का हिस्सा है और ये जो कैच एक एफर्ट थी इसमें करीब तक कामयाब हो जाते और दूसरी तरफ अगर गेंद जाके सब के ऊपर लगती तो फिर आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात हो जाती। बहरहाल बाल बच गए, एहसन स्ट्राइकर एंड से नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच गए। सकलैन गेंद करेंगे, इस बार बॉलर के ऊपर से और बॉलर ने एंटिसिपेट नहीं किया। खैरियत इसी में जानी कि अपने आप को झुका लिया जाए और गेंद को अपने ऊपर से पीछे जाने दिया जाए। ये दिलचस्प होगा रिप्ले, शानदार, जोरदार और जबरदस्त चौका ताहा का। सकलैन बिल्कुल बेयारो मददगार थे, इनको रोक लेना चाहिए था। इस गेंद को नीचे किया, अच्छा था, अपना सर नीचे कर लिया और सर के ऊपर से गेंद को पीछे जाने दिया। अब ऐसा कम होता है क्रिकेट में, आप अगर नहीं रोक सकते या दरअसल से बाहर भी है तो एक एंटिसिपेशन दिखाएं और गेंद को रोकने की या कैच करने की कोशिश करें। और इस चौकी की मदद से 50 रन भी पूरे किए कराची ब्लूज ने। यार गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी और शायद मौका भी नहीं था सकलैन के पास, तो आफियत इसी में समझी कि गेंद को जाने दिया जाए। ये बहुत तगड़ा स्ट्रोक था ताहा का। डिफाई स्ट्रोक ऑफ साइड पर। इस ओवर में अब तक 10 रन बन चुके हैं, एक डॉट बॉल भी है और 2 चौके लगे हैं। चौके T20 क्रिकेट में बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। ये टिपिकल स्कोरिंग शॉट्स होती हैं
फोर्स एंड सिक्सेस। ये जो क्रिकेट है T20 है, ये चौकों छक्कों से मुतल्लिक है, रन से मुतल्लिक है, तेज़ रन से मुतल्लिक है। शायकीन क्रिकेट इसलिए इसको पसंद करते हैं। और हम देख सकते हैं कि गाहे गाहे लोग जैसे ही रात ढलती है या रात शुरू होती है तो आ जाते हैं। इस गेंद को खेल दिया है फाइन लेग की जानिब। ये अच्छी इम्प्रोवाइजेशन थी ताहा की। तो इस ओवर में ये तीसरा चौका लगा है। 55 स्कोर हो गया है 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि 8 ओवरों का खेल भी मुकम्मल हो चुका है। ऑन साइड पर प्लेस, आसानी से एक रन 2 रन बन सकते हैं। हाँ, ना की आवाज़ मिक्सअप हो सकता था, लेकिन अच्छा किया कि हसन ने मना कर दिया, बल्कि आप वहीं पर खड़े रहें ताहा को, बल्कि ताहा ने मना किया हसन को कि यू नीड नॉट टू कम फॉर सेकंड। हसन 24 पर, ताहा 27 पर। अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदें की हैं, ताहम रन्स बने हैं ज़ाहिद की गेंदों पर। अच्छी राइट हिट गेंद, और जो स्पिनर हैं इनकी हर गेंद स्पेशल होती है। जो नैगिंग लाइन और लेंथ वाले स्पिनर्स हैं उनसे दुनिया वाकिफ है। उन्हें सैकड़ों विकेटें हासिल की टॉप क्रिकेट में। कट सीधा डीप कवर में, कोई जवाब मौजूद नहीं था। अगरचे यहाँ पर फील्डर आमतौर पे रवायती तौर पे खड़ा होता है, लेकिन ताहा ने ये देखा दारिस्तन ये गेंद को पेश किया उस जगह पर जहाँ पर फील्डर मौजूद नहीं था, तो इस तरह एक बाउंड्री हासिल की। जी हल्का सा पीछे के रूम बनाया और ये शॉट देखने के काबिल था। अंपायर के बिल्कुल करीब से होता हुआ बॉल गया और कोई मौका नहीं था डीप पॉइंट के खिलाड़ी के पास यहाँ फील्ड करने का। कदमों का इस्तेमाल, जोरदार तरीके से गेंद को खेला है ऑन साइड पर, और फील्डर पहले आगे गए फिर पीछे आए। ये काफी फोर्सफुल बैटिंग है, और अगर गेंद सही तरीके से कनेक्ट हो जाता तो फिर ये बाउंड्री लाइन के ऊपर से भी जा सकता था। बहरहाल फील्डर दूर थे। एक अटेम्प्ट थी एक बड़ी शॉट की ताहा की जानिब से। बाल बच के कहना होगा, अगर थोड़ा और जोर लगा लेते या और ज्यादा जोर लगाते तो या तो ये कैच होता या बिल तरतीब पर छक्का भी हो सकता था। बहरहाल जाहिद नबी तुली बॉलिंग करते हुए, ऊंचा स्ट्रोक है, टॉप एज लगा है लेकिन काफी थिक है, लेकिन फील्डर की दस्तक से दूर था। अब ये 2 मौके ऐसे मिले हैं जहां पर किस्मत मेहरबान रही है बैटर पर। कैच उस जगह पर गया जहां पर फील्डर मौजूद नहीं थे। मायूसी चेहरे से छलकती हुई जाहिद के, और इसे पिछले अगर शॉट की बात करें तो मिड विकेट के फील्डर और अच्छा एफर्ट कर सकते थे, लेकिन उतनी अच्छी एफर्ट मिली नहीं जिसकी तवक्को कर रहे थे जाहिद। और ये देखिएगा, ये मिड विकेट का स्ट्रोक, ये देखिएगा फील्डर रुक से गए थे और उतनी रफ्तार से दौड़े भी नहीं कि जो जाहिद ने तवक्को की। और ये बॉल हवा में तो बड़ी देर रही, लेकिन लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों के दरमियान में सेफली लैंड हुआ बॉल। शाहनवाज धानी आए बॉल को कलेक्ट करने। वो जो एक सरपट दौड़ना होता है ना, आप दीवानावार दौड़ते हैं, वैसा हुआ नहीं। आप दौड़ पड़ते हैं जब गेंद आप देखते हैं फिजा में, आप जज कर लेते हैं, आपका तजुर्बा करना मुशाहिदा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। दोनों सूरतों में आप ट्राई कर सकते, तो कोई गैर यकीनी कैच या कोई गैर यकीनी एफर्ट ना होती। बहरहाल ये इवेंटफुल ओवर था जाहिद का, जो खत्म हो चुका है। 63 और 1 विकेट गिरी है, जबकि 9 ओवरों का खेल भी मुकम्मल हो चुका है।
Bowling change. 2 minutes. Bowling change. Left up down. टावल पीछे करवा लिएगा। ताहा और महसान के दरमियान 51 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। अली असगर बॉलिंग करने के लिए आए हैं और ये भी नामी ग्रामीण क्रिकेटर हैं, लेफ्ट आर्मर हैं और इनको सही मौके पर मुतारिफ करवाया गया है। ये नैगिंग लाइन और लेंथ से गेंदें करते हैं और पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो इनको जानते हैं। ये बज़ाहिर लंबे कद के हैं, इन्होंने बजाय पेस बॉलिंग को जो स्पिन बॉलिंग है उसको अपना शार बनाया है और पहली गेंद शॉट खींच करके 1 रन का इजाफा। पिछले मैच में नहीं खेले थे अली असगर, लेकिन आज इनको मौका दिया गया है अपना लोहा मनवाने का, अपने झंडे गाड़ने का। अब देखते हैं कि कोचेस की और कप्तान की, अपने फैंस की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं अली असगर। अली असगर एक मरतबा फिर एक और शॉट गेंद। ज़ाहिर ये 2 गेंदें, उनमें वो काट या वो फ्लाइट या वो वेरिएशन नहीं थी जो कि लेफ्ट आर्मर का खासा होती है। शायद वो अभी अपने आप को लूजन अप कर रहे हैं, गेंद को फ्लैट फेंक रहे हैं और जैसे ही वो जो एक काट व्हील एक्शन होता है बॉलर का, उसमें वो सेटल हो जाएंगे, रमा हो जाएंगे, फिर हर किस्म की गेंद करेंगे। बाएं हाथ से खेलने वाले ताहा 34 रन की उम्दानी खेलते हुए कदमों का इस्तेमाल, जोरदार तरीके से गेंद को खेला है ऑन साइड पर और फील्डर दूर थे, लेकिन फिर भी एक अटेम्प्ट होनी चाहिए, तेज दौड़ना चाहिए। 4 रन हासिल कर लिए ताहा ने। एक जन्नाटेदार माइटी हीप जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो ये अटेम्प्ट थी और गेंद पलक झपकते ही 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। बड़ा जल्दी पोजीशन में आ गए थे इस मरतबा ताहा। स्क्वायर लेग का फील्डर मौजूद था, उसकी परवाह न लेकर आए और एक हमला कर दिया उन्होंने वहां पर। ये अजीब गरीब स्ट्रोक था, वो जो एक अटेम्प्ट होती है एक पैरेलल स्वीप की, वो ये थी, लेकिन अली असगर ने गेंद को एक तो शॉट किया, दूसरा ऑफ स्टंप से फायर कर दिया। तो ताहा के लिए काफ़ी मुश्किल थी कि इसको वो पैरेलल स्वीप के लिए खेलें। नॉट आउट हैं, अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे हैं और ये पार्टनरशिप जो है 50 से ज़्यादा रन बना चुकी है। दोनों बड़े अच्छे अंदाज से आगे बढ़ते हुए, रन बनाते हुए आउट हो जाएंगे। ज़बरदस्त स्टंपिंग और क्या अभी ये टीवी अंपायर की तरफ रेफरल जाएगा? बज़ाहिर मुझे तो इम्कानात कोई दिखाई नहीं देते, क्योंकि जिस वक्त स्टंप्स को उखेड़ा या बेल्स उड़ाएं विकेट कीपर ने, पहले नो बॉल देखेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। ये तो एक रस्म है, एक तरीकाकार है, एक प्रोटोकॉल है, लीगल डिलीवरी थी। और यहाँ से हम अगर अब देखें, बेहतरीन लेंथ वाली गेंद नीचे रही और यहाँ पर दूर थे बैटर ताहा, इनके लिए मुश्किल वक्त है। लगता है कि फैसला जल्द आने वाला है, इंतज़ार में हैं और वो देखेंगे जो ये देखना नहीं चाहते। विकेट कीपर ने बड़ी चाबकदस्ती से इस तरीके से स्टंप्स पर हाथ लगा दिए, गेंद उनके हाथ में था और अभी ये जो ग्रूव से अब बेल्स हवा में मुहलक हुई और ये अब फैसला करने की घड़ी है फॉर द टीवी अंपायर। टीवी अंपायर जो हैं तारिक रशीद हैं। तो इस तरह मोहम्मद ताहा अपनी विकेट को बैठे 38 रन बनाकर आउट हुए। इनको स्टंप किया मोहसिन अली ने और अली असगर ने यह कामयाबी हासिल की अपने पहले ही ओवर में 69 पर 2, 9 ओवर। बल्कि अब यहाँ पर ड्रिंक्स कॉल कर ली गई हैं, तो इस दौरान एक ड्रिंक्स ब्रेक है।
29 for 2. 9.5 overs. They've lost 2 wickets. The first one was Janzib, very unlucky to be given out. And then now the latest wicket from Taha. Yeah, we can expect that from him. Yeah, the celebration still, how important that wicket was. It has just put a little break on this run chase because the required run rate is still 9.05 as Mohammad Afzal now comes in. He's got a job to do now. He's got to stay there with Ehsan, who's looked good for his 26 runs of 19 deliveries. It's very important they don't make a mess of this run chase because they're in control at the moment. And that's nice and confident. For a single, come to the end of 10 overs. They've scored 70 runs, losing 2 wickets. So let's head down to Mirib, who's got an interview lined up for you. ABS Developers T20 Qualifiers and we are here. फैसल अतर मेरे साथ मौजूद हैं, लाड़काना के हेड कोच हैं. इनका अपना डोमेस्टिक का कितना लंबा कैरियर है, तो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन तो जारी होगी टीम के साथ. फैसल, एक एसोसिएशन हो जाती है आपको एक टीम के साथ और आपका अपना एक इतना लंबा कैरियर है, इतने रन्स हैं आपके, कैसे डिलीवर करते हैं आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अपना एक्सपीरियंस यंगस्टर्स के साथ? देखें, जैसे आप जानते हैं कि एक लंबा कैरियर है तो क्रिकेट के इनसाइड आउट तो बहुत अच्छी तरह हम समझते हैं एंड प्लेयर्स को भी हम समझते हैं कि उनके ऊपर क्या गुजर रही हो, तो रिलेट हम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं. उनको अंडरस्टैंड करते हुए उनकी स्किल्स हैं, उनके टेक्निकल स्किल्स हैं या टैक्टिकल स्किल हैं, उन पे भी हम काम करते हुए प्रोग्रेस करते हैं. और स्पेशली हमने जो वहाँ पे कोशिश की है वो इनकी अप्रोच और इनकी सोच, इसको हमने डेवलप करने की कोशिश की है ताकि ये डिफरेंट अंदाज में ये कंपटीशन में आए. बिल्कुल ऐसे ही है. लाड़काना में टैलेंट हंटिंग भी होती है और डेफिनेटली आपको पता है कि टैलेंट वहाँ से निकालना भी एक मुश्किल जॉब होती है. कैसे देख रहे हैं लाड़काना का टैलेंट, स्पेसिफिकली आप कैसे देख रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ लाड़काना का टैलेंट देख के. उसकी वजह ये है कि ट्रेडिशन जो रही है और जैसे शाहनवाज दानी ऊपर गए हैं वहाँ से, तो जो मैंने एज ग्रुप में भी चेक किया है तो वहाँ पे फास्ट बॉलर्स का स्पेशल टैलेंट हमें नज़र आता है. सकलैन नवाज जो हमारे साथ खेल रहे हैं वो PGL भी खेल चुके हैं. सो इसके अलावा भी जो बॉलर्स हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव हैं और हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ अगर आप कह लें तो हमारी स्ट्रेंथ भी फास्ट बॉलिंग नज़र आती है विद द स्पिनर्स एज वेल, के जैसे जाहिद महमूद हैं और दूसरे स्पिनर्स हैं. तो इससे हमारा जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा है. हमने ज़्यादातर काम किया है बैटिंग डिपार्टमेंट को कि उसको हम इम्प्रूव करें और उसमें हम इंजेक्ट करें अपने एक्सपीरियंस को भी और उनके स्किल्स को भी इम्प्रूव करें, और जो उन्होंने थोड़ा बहुत आज यहाँ पे शो किया है. बिल्कुल सही है. फैसल, अगर हम गुज़िश्ता मैच देखते हैं और आज का मैच, तो हमें एक कंट्रोल नज़र आ रहा है. जैसे मतलब शुरू में अर्ली विकेट्स चली गई कुछ रन्स के बाद, लेकिन फौरी तौर पर अभी अगर हम देखते हैं तो जिस तरह से आपने उस वक्त कंट्रोल किया, स्टिल अभी अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तकरीबन स्कोर इक्वल जा रहा है. लेकिन ये है कि आप आज का मैच कहाँ पर एंड होता देख रहे हैं? देखिए, हमारी साइड जो है यंग साइड है और जो ड्यू फैक्टर था उसमें खेलने का एक्सपीरियंस नहीं था. सो बड़ी जल्दी इन्होंने अडेप्टेबिलिटी की है और चीज़ों को समझा, और हमने भी ये फोकस किया कि जो ज़रूरत है आप उस पर रहें, उसको फोकस करें और जो बेस्ट कर सकते हैं आप उसके साथ सिंपल रहें. तो वो इन्होंने किया क्योंकि एबिलिटीज़ इनमें मौजूद हैं. तो जैसे मैंने आपको कहा फास्ट बॉलिंग, और जिस तरह ये टूर्नामेंट प्रोग्रेस हो रहा है, चल रहा है कि डिफेंड करना आसान है, चेस ज़रा मुश्किल हो रहा है. सो थोड़ा सा ये भी एक चेस था और फिर ये यूज टू होते जाएंगे जैसे जैसे ये यंगस्टर्स क्रिकेट खेलते रहेंगे. बिल्कुल सही है. थैंक यू सो मच फैसल. ओवर टू द कॉम बॉक्स. Right, 11 done, 73 for 2. Right, that was Faisal Athar. I think we're having a word with us. Yeah, that he swings. Fielder there. Yeah, just over his head for 6. Ehsan Ali is doing a good job for his side, staying there as he moves to 33 with this excellent hit. Yeah, this was hit over the fielder, waiting on the boundary at mid-wicket. Just have a look at this. In the arc,
picked the right length. He knew the ball isn't spinning, so he went with the angle. And in the end, clearing the fielder. One more pull stroke this time, and it's a boundary. No chance for the fielders. Hit hard. Very important, these two boundaries are giving some sort of ease to the Karachi Blue side. They now moved to 83 for 2 into the 12th over. They want to ease it and get it close to run a ball, or maybe less than that. That is where they want to get to. And Hassan will prove to be a pivot. If he stays any good length of time over there, he'll make things easy for Karachi. Still 78 of 52 required. Yeah, he can predetermine that the ball isn't going to spin. Makes it much easier to just keep on playing with the angle. And that required run rate, you see, 9.06, that will not be an issue if Hassan Ali stays till the end. Because we saw what he's capable of. Previous delivery, he hit a 6 and a boundary this over. Oh yes, gone. Wow, what a catch. Fantastic, and what a time to get the wicket. Ghulam Raza taking a blinder. It's Afzal who has to go. This is a good period, good comeback from Larkana side, Salman Butt. It is very disheartening to see this lack of awareness among players. We've just seen a 6 and a 4 in this very over, and then a single taken. So 11 runs scored of the 3 balls, and this boy, Afzal, is a new man in. He's just batting on 2, and straight away he wants to be part of the action, go after, and show that he's got strokes. And in the process, he loses his wicket, and he dents his own team's chances. No problems with the catch. It's cleanly taken, and it's just not the way the cricket is meant to be played. He's waiting for the umpire's decision whether the catch was clearly taken or not, but now I think he's got the nod. He has to leave 2 for 6, rush of blood, and Karachi now 84 for 3 after 11.4. Usman Rahim scored a brilliant 50 in the previous game. He scored 52 runs of 39 deliveries. He was the player of the match. Karachi was in a similar sort of position. They were down and out when he came into bat. He'll have to do it one more time, although he has the luxury. Oh, brilliant. They've got some spring in them. Larkana fielders, they're doing a good job making it tough for the batters. That's what you want to see, the fight from this young side of Larkana. Nice. Is it in the gap? Fielder. He won't be able to get it. Is it hit the skirtings on full? Third umpire surely will be consulted. But it was sweetly timed from Usman. Beautifully struck. Just timing, pure timing in that stroke. Just using, once again, good use of the angle from the batter. We saw earlier Hassan play with the angle, knowing that there isn't any turn available. And Usman, who's batted enough on this in these conditions to know that nothing for the spinners. No spin expected. Have a look at this. Wow. Just timing, full face of the bat, and I think it has hit the skirtings. Seems as if it's just bounced inside and then onto the skirtings. Yeah, that's how it seems.
This may be a better angle. Yeah, bounce and then hit the skirtings. Should be a 4. Shouldn't be a problem after this angle. वो लगता है rebound होता है लग के. Yeah, umpire has been very busy. Tariq Rashid, the third umpire. He'll have to make another difficult decision. Just waiting. But it was a very confident start from Usman, starting off where he left in the previous game. That's what good innings do to your confidence. You're high on confidence. We're still waiting for the final verdict from the third umpire, Mr. Tariq Rashid, because every run can make a difference. Right, with the zoomer now. Just zoomed in, good camera work. But this angle might not give you the 100% picture, clear picture. The other angle may be a better angle to find out what has happened. But with this angle, this surely looks like that it is just bouncing before it. Yeah. Right decision made. Salman Butt made this decision way earlier than the third umpire did. You can have a very good career as an umpire, Salman Butt. Thank you, Ali Bhai. You always talk about opportunities. So it's Zahid now, looking for wickets. And Hassan down on one knee and hits it way past the boundary ropes. Another 6. It's raining boundaries at the moment. And it just sounded 6 the moment it hit the bat. It was pitched up. That's what I said. If he stays, this match will be over soon. Because he can hit like this. Bang. Down on one knee. And great swing of the bat. Great follow through also. Making an arc, completing that arc. Zahid Mahmood. Just need one wicket to get to 100 wickets. Not been able to get it so far. I mean, we know that because we have a statistician with us. But Salman, do cricketers have that in mind that he needs one more wicket? Would he be thinking about it? I'm sure he'll have the idea that what he requires to get to this milestone. Now there is some discomfort in the ankle for the fielder at deep point. Yes, he's asking for some help. He's signaled to the team physio. And there can be a possible delay. In fact, the substitute fielder is in. They've signaled it to the umpires. 65 of 46 balls required. Treatment in progress. Well ball! क्या बात है यार? 65 more runs or 45 deliveries. The required run rate has come down to 8.67 now with those couple of sixes from Ehsan Ali and a boundary to Usman. Fielder just over his head for 6. Second 6 for Ehsan Ali in this over as he brings up his 50. A brilliant, sensational knock from him. Karachi Blues has been waiting for this sort of inning from him, and it's come. Yeah, this is what we all thought is very much a possibility if he stays at the crease. 52 of 28 at a strike rate of
around 150 or maybe plus. It's so far the joint fastest in the current tournament. Rizwan Ali from Islamabad, the man scoring 50 on this particular number of balls, 28. And now it's Ehsan. And it's Captain Zahid. He's played Test cricket for Pakistan, but here he's feeling the heat. Long delays since Ali Bhai, we have taken the mic. Long delays. Yeah, they've been sending the ball towards the stands. Not the first time. 3 sixes that we've seen since we have come. And a beautiful boundary from Usman. And if he stays, this will be over soon. Salman, we can have a break then. A longer break in between the two games. If Ehsan Ali stays. Because the next game, it will be Azad Jammu Kashmir taking on Islamabad. Yeah, if he lost the distance, then maybe a longer break. But at the moment, it's cricket. 59 more required, 44 balls. A couple of wickets here can really stir things up for Karachi. And you're never really sure. And once again, there was width on offer. But this time around, straight to the fielder. Ehsan doesn't hold back once the ball is in his arc. He likes to go after it. Got hard, just the one to end the 13th, 103 for 3. .53 of 30 deliveries. Ehsan Ali is playing a match-winning knock for his team as they need 58 runs of 42 deliveries. By the look of it, shouldn't be a problem for Karachi Blues. Required run rate 8.29, and the way Ehsan Ali is hitting them, it's very brutal hitting. When he hits it, it's hard, it's long. Back to the fast bowlers now from Larkana. That will be wide. It's called by Ahmed Shahab. All eyes have been on Ehsan Ali. 53 runs of 30 deliveries. Been magnificent from the ball one. We've seen some brutal hitting, some clean hitting. And he hits it, he hits hard. And in the gap also. And once he's set, he hits those big hits, which stays hit. Big hits, monstrous hits. Picks the length quickly and hits them towards the stand. A fantastic one from a very talented batter. Yeah, that's good. He's not afraid of pitching it up to him. He thought he's missed out. The smile. Saklan Nawaz into his third over. 57 runs of 41. It's good that Shanwaz Dhani has seen something. He's just come up to his young partner and told him something. That what needs to be done.
And that's not really a shot that we associate with Hassan Ali. That's not very clever from Hassan Ali. He's well set. He's been striking the ball in front of the wicket. He's hitting down the ground in the cow corner. And this is just trying to be something that you are not. .57 of 40 required, so shouldn't be a drama from here unless Karachi make mistakes. Fielder cannot do much because it's played in the gap for 4. So once a player like Hassan Ali, he gets set, it's very hard to stop him because of the range of shots he has. This one not quite in control, not where he would have liked, but still it was in the gap. That's the sort of form he is in tonight. Yeah, he'll keep going after the bowling. This time he scooped one and it flew over point between the two boundary riders, the third and the cover point boundary. Now they have a deep point and short third in the circle. And this time the edge is finer, but an educated one goes through the fielder and the keeper. Another boundary. So runs flowing now as boundaries come back to back for Karachi Blues via Hassan Ali, who moves to 61. I like the term you used, an educated edge. Someone which is the edge which is in control, maybe, because it went right between the two fielders. It could have either gone to either day. It would have gone to the fielder's hand, but because it was an educated one, he knew where to go. The difference literacy makes sometimes. Makes it easy to make decisions. That's exactly what that edge made a decision for himself. Cross seamer coming up, and this one smashed, but there's a fielder in the deep. He will keep it to 1, but another good over so far. A ball to go, and he has 2 boundaries and a single, so 9 already. 48 more required of 37. A set batter in Hassan, and on the other end Usman, who made a half century in the previous game, and here has already struck a beautiful boundary over cover. Beautiful view, great camera work, great direction. Full toss, dealt with in the hands of the fielder. Shahnawaz Dhani was there. It was hit nicely, but Shahnawaz Dhani was in the way. One too many. Once again, there's no problem with the front foots, but once again, the batter, who's not very well set, just arrived at the crease, just wanting to match Hassan Ali, and in the process losing his wicket, and just causing some disturbance in that path to victory for Karachi. Something not required. Usman Rahim goes for 4. Karachi 113 for 4 after 14.
captain, Ghazi Ghori. Karachi Blues are in a good position, 48 of 36. They don't want their batters to be making mistakes, which the previous batter did. When Ehsan Ali is there, you don't have to be a hero. You just have to play a side role. Keep giving him the strike. Let him do the striking. He's good at it. He's seeing the ball well. As we see now, Mr. Raza, Ghulam Raza. This is flicked by Ehsan Ali, and he'll be quickly back for the second. And in the end, has just narrowly escaped the throw, which could or might have hurt him. And this is how Usman lost his wicket, trying to go for a big hit. It's such a common sight in these youngsters that they decide to hit the ball out of the park for no reason. Just trying to fulfill their desire. They tend to ignore whether the team requires that or not, whether the situation demands this sort of batting or not. And this is such a bad habit to carry as a professional. And we are seeing the issues caused by this when the boys get to the top level. It's hard for them to control. And this is part of your temperament and also your game awareness, to know what the team requires and what needs to be done. Game awareness is such an underrated thing these days, where you just do what you feel like doing, not realizing what the situation demands of you. If you've got a good game awareness, you would have known that there is no need when Ehsan Ali is there on the other end. But we are all here to learn. Yeah, that's a wide. See, runs will keep on coming. There is no issue. If they stay there, runs will happen. They will come. Yeah, looking for that Yorker maybe. Not well directed. Is it inside edge or given? No, it's still going straight to the stumps. That's what umpire Farooq Ali Khan thought. For a moment, I thought there's a couple of voices or noises, but not to be. It's given out by the umpire. No problems there whatsoever. Ehsan Ali goes bang straight into the leg stump. Farooq Ali Khan had no hesitation. Now that things will get interesting. As Ehsan Ali goes back scoring 65, it's 118 for 5. Wahaj Riaz, the new batter in. Now it will be interesting how they deal with it, because Ehsan Ali was very much was the player who was scoring runs at his will. And now two new batters on crease. Yeah, wicket here and real pressure on Karachi then. Both the batters, I'll say, soft dismissals. A set batter getting out on a full toss. Yeah, there's an appeal. This time the umpire says no, but a close call. Last two wickets, if we can see them again, soft dismissals at this stage of the game. And this is the appeal.
Wahaj Riaz straight away going after a cover drive and beaten outside the off stump. Well, this is in the air, maybe a chance, three fielders converging, but it drops right in the center as things heat up in this game. 15 overs bowled, Karachi Blues 119 for 5. बैरूनी दुनिया से भी राब्ता है और जाहिर है कि मैच से भी लुत्फानंदोज हुआ जा रहा है। ये दिलचस्प मैच है, दिलचस्प हो सकता है। के इस वक्त कराची को अपर हैंड है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से विकेटें गिरी हैं इसने कुछ दबाव डाल दिया है कराची ब्लूज पर। इस गेंद को ड्राइव के ऑफ साइड पर अच्छी फ्लुएंट ड्राइव थी, 1 रन का इजाफा। क्रिकेट बढ़ेगा, यकीनी नताइज और ऊपर नीचे होने वाला खेल है, इसमें आप कुछ कह ही नहीं सकते। नए बैटर आए हैं, कुछ वक्त लेंगे और ये शाहनवाज धानी हैं, तजर्बाकार हैं, उनकी गेंदों में काट है, लाइन और लेंथ अच्छी मेंटेन करते हैं, गेंद को स्विंग भी करते हैं। देखना होगा कि किस तरीके से अब इस ओवर में वो कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जिसकी ज़रूरत है लाड़काना को। लंबे लंबे ढक भरते हुए शॉर्ट गेंद कट करने की कोशिश में नाकामी, विकेट कीपर भी डिसीव हुआ है। ये कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है ऐसी सूरत हाल में जब रन्स बचाने की अशद ज़रूरत है, जल्दी करना होगी। और बैटर दौड़ते रहे, बाय के 2 रन्स। ये कीमती 2 रन्स थे और कोई गैर मामूली उछाल भी नहीं देखने को मिला और एक सीधा साधा बॉल विकेट कीपर की तरफ आ रहा था जिसे उन्होंने मिस कर दिया। 2 स्कोर कराची को मिले। इससे पहले 2 यकमुश्त विकेट्स हासिल की हैं। ये अब देखिएगा, आराम से पकड़ सकते थे लेकिन चूक गए। उजरत में, तेजी में गेंद हाथ से स्लिप हुई, इस गेंद को स्टेयर किया। लगता है कि बैटर को गेंद नजर आ रही है। ये एक मुश्किल स्ट्रोक होता है, लेकिन अगर बैटर इसको एतमाद से खेले तो फिर ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। स्टेबिलिटी होनी चाहिए और ये जो अफरा तफरी वाली सूरत हाल है ये कराची को मुश्किलात में डाल सकती है। लेकिन स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, गाहे गाहे बाउंड्री ट्राई करना होगी। वहाज 27 गेंदें 38 रन, कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसे हम कहते हैं ना जुए शेर लाने के मुतरादिफ, ऐसा काम नहीं है। ऊंचा स्ट्रोक और एरी फेरी शॉट है, पीछे गई है जहां पर कोई फील्डर नहीं होता। रवायती तौर पर गेंद चौके के लिए बाहर चली गई। लकी 4 रन्स फॉर बहाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, शगाफ कम होता हुआ। 26 गेंदें 34 रन, जो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ये दोनों बैटर मौजूद रहे, बहाज खेलते रहे, गाजी इनका साथ देते रहे, जो कि एक कामयाब क्रिकेटर हैं, ये पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद गई दूसरी तरफ यानी थर्ड मैन की जानिब 4 रन के लिए। ये दोनों बैटर जो है वो न्यू आए हैं क्रीज के ऊपर। क्यों यहाँ से ऐसा मैच जो है वो कहीं भी झुक सकता है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ 4 ओवर का खेल बाकी है और 34 रन दरकार हैं। कराची लाड़काना अगर विकेट हासिल करे तो सनसनी पैदा हो सकती है एक बार तो फिर इस मैच के अंदर। ये कोशिश करेंगे धानी। सिंगल कम अज कम, और सिंगल्स की ज़रूरत है। जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं दोनों बैटर, बाउंड्री लग जाती है एडवर्टेंटली या इनएडवर्टेंटली, चाहते हुए या ना चाहते हुए। जैसे भी इस ओवर में हमने एक चौका देखा है, बैट्समैन की इंटेंशंस और जगह खेलने की थी, ऑन साइड पे गेंद टॉप एज पे लग के थर्ड मैन की जानिब गई।
तो ये जो एजी स्ट्रोक्स हैं ये भी बाज़ औक़ात बड़े मुफीद होते हैं, गो के देखने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन जो क्रिकेट है वो रन से मुतल्लिक है। और इस वक्त तो चौकों और चौकों की भी ज़रूरत है। अगर गाहे गाहे लगाते रहें, रिलैक्स रहें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें, तो काम मुश्किल नहीं है कराची ब्लूज़ के लिए। 16 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ, 129 पे 5। आपके सामने जो शुमारियात हैं, जो रन्स दरकार हैं, जो बॉल के वसाइल भी हैं, इनमें बड़ा कम फ़र्क है। गाजी और हाज विकेट पर मौजूद हैं, अगरचे नए दोनों बैटर हैं, लेकिन अच्छा मिडल कर रहे हैं। इंटेंशंस इनकी वही हैं कि रन्स बनने चाहिए, सिंगल्स में, डबल्स में। 129 16 ओवर्स में कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है। फुल टॉस घुमा दिया इसको ऑन साइड पर, सीधी फील्डर के पास। जहां तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है कराची ब्लूज की, 16 ओवर 1 गेंद 130 रन। इस मौके पर ज़्यादा रन बन जाने चाहिए, इनको करीब हो जाना चाहिए था मतलूबा जो हदफ है उसके, लेकिन यूँ लगता है अभी दूर है ये। 23 गेंद 31 रन, आसान काम है इन दोनों के लिए। ये ऊंचा स्ट्रोक है मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान से, फील्डर आए, 2 रन स्कोर इजाफा। हाज और गाजी, आज अच्छी शॉट मेकिंग कर रहे हैं। गेंद इनको ज़रा ध्यान से करनी होगी, तवज्जो से करनी होगी। ये आगे पड़ी हुई गेंदों को जोरदार ड्राइव कर रहे हैं, पुल भी इनकी अच्छी है, कोई बहुत ज़्यादा फोर्सफुल नहीं, लेकिन इतनी ज़रूर है कि चौके और छक्के लगा सकते हैं आसानी से। एक रन की फ्लो जो है वो जारी है। इससे पहले हमने देखा कि कराची अपने हदफ का ताकुब बड़ी आसानी से कर गई थी, और आज भी लग ऐसा रहा है कि अपने जीत का जो तसलसल है उसे बरकरार रखे कराची। यहाँ से कहानी इतनी मुश्किल नहीं है इनके लिए। 21 गेंदों पर 28 मुश्किल नहीं है, विकेट पे स्टे करना होगा गाजी, गौरी और वहाज को। फुल टॉस अच्छा इंडियन नेगोशिएट किया, और फील्डर की ड्राइव, एक कामयाब कोशिश, 2 रन स्कोर इजाफा। तो ये जो फंबलिंग है ये वक्त फराहम कर देती है फॉर द बैटर्स कि वो 1 को 2 में बदल लें, और बाज़ औक़ात जब सीधी भी गेंद जाती है फील्डर के पास, वो फंबलिंग कर लें तो फिर सिंगल हो जाता है। अगर इस गेंद को हम देखें, फुल टॉस थी, मुड़े और उस समय खेला जहाँ पे 2 रन मौजूद थे। लेंथ से मुतादिद मरतबा भटके हैं इस ओवर के अंदर, ये दूसरी फुल टॉस थी। जोरदार ड्राइव, और फील्डर गेंद के पीछे चले गए, और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। अब ये हैरान किया कि मिडॉन पर फील्डर आगे क्यों थे, इनको थोड़ा पीछे होना चाहिए था। एक कीमती चौका हासिल किया गाजी ने, और अब इक्वेशन जो है 19-22 की, यानी 19 गेंदें हैं, 22 रन हैं। इस चौके की मदद से काम और आसान होता हुआ। ये आगे की तरफ खड़े थे मिडॉन के फील्डर सर्कल के अंदर, और उसी के पेश नज़र ये कोई अच्छी लेंथ नहीं थी बॉल करने के लिए। एफर्टलेस स्ट्रोक खेला, 4 रन, और रफ्ता रफ्ता जो फ़र्क है गेंदें और स्कोर का उसको बहुत कम करती हुई। एक बेहतर गेंद थी, लेकिन इसको खेला ऑफ साइड पर। दानिश स्ट्रोक था ये, कोई इतना इंप्रेसिव नहीं था, 1 को 2 में बदला। अब 20 रन चाहिए, क्या मुकर्रर 20 ओवर से पहले ये हदफ हासिल हो जाएगा, ये देखना होगा। 17 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ, कराची ब्लूज 141 5 विकेटों के नुकसान पर।
ABS Developers National T20 Qualifier 2025-2026 का ये मैच के कराची ब्लूज वर्सेस लाड़काना के माबैन है। टॉस कराची ब्लूज ने जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और यूं अब 161 का हदफ है, 162 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए, बल्कि 20 रन और चाहिए 161 के लिए। स्टीयर करने की कोशिश, ये खतरनाक अमल था, गेंद बैट के ऊपर से होती हुई सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में गई और पूरा अपना तजर्बा, पूरी महारत, पूरी कुव्वत लगाते हुए शाहनवाज धानी अच्छी हाइट पर आई, विकेट कीपर ने अच्छे तरीके से गैदर किया। ये वहाज हैं 10 रन पर नॉट आउट हैं। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रफाकत कायम करनी है और मतलूबा 20 रन हासिल करने हैं। काम आसान है लेकिन तनासानी की गुंजाइश नहीं है, इनको मुतहर्रिक होना होगा और हदफ जल्द से जल्द हासिल करना होगा। बीट हो गए। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई विकेट गिरती है तो फिर लाड़काना की टीम मैच में वापस आ सकती है। जिसका एहसास है शाहनवाज धानी को और उसी तकोदो में मशगूल नजर आ रहे हैं कि विकेट हासिल करने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है लाड़काना को। पिछली 2 डिलीवरीज आप देखें, उससे साफ जाहिर होता है कि क्या अप्रोच है शाहनवाज धानी की। जानते हैं कि गेंदें बहुत ज़्यादा हैं तो विकेट मुझे हासिल करनी होगी, मुझे अपनी टीम के लिए यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू दिलवाना है और वो कर सकते हैं, उनमें सलाहियत है। रन्स काफ़ी कम हो गए हैं, अब अगर विकेट गिरती भी है तब भी 20 रन कोई ज़्यादा दुश्वार गुजार हदफ नहीं है। इस गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेके जानिब खेले हैं। ये ऐसी जगह जहाँ पर आमतौर पर सूरत हाल में एक फील्डर मौजूद होता है। फास्ट बॉलर का जो स्क्वायर का एरिया उसको आमतौर पर कवर रखा जाता है और स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद होते हैं। वहाँ आज 11 पर पहुँच गए हैं। 7.60 की जो फी ओवर औसत है वो उससे इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि 15 गेंदों में 19 रन, ये कोई चैलेंजिंग काम नहीं है, टारगेट नहीं है, आसानी से हासिल कर लेंगे। गाजी सामना करेंगे, ऑन साइड पे ड्राइव, खड़े खड़े विकेट में बाजुकात ऐसे लगता है कि बड़ी मदद है बैटर्स के लिए। इन फ्रंट ऑफ द विकेट्स शॉट्स लग रही हैं, ऑन साइड पे शॉट्स लग रही हैं, पैरेलल स्वीप भी अच्छी हुई हैं। बॉलिंग लाड़काना की काफ़ी मुनासिब थी लेकिन कराची ने उस हदफ को हासिल करने में अब तक बड़ी कामयाबी से पेशरफ्त की है। वहाज और गाजी मसरूफ़ अमल हैं। ये एक छोटी पार्टनरशिप है लेकिन काफ़ी कारगर साबित हो रही है फॉर कराची ब्लूज़। 18 रन का शगाफ है। ये वहाज हैं, काफ़ी बाहर। अंपायर अहमद जिहाब वाइड करार दे दिया। बॉलर पर कोई प्रेशर भी नहीं है लेकिन उनमें वो जुस्तजू और वो एक उनकी बॉलिंग में वो ख़तरा नहीं है जो कि बैटर्स के लिए मुश्किलात पैदा करे। ये डग आउट है, यहाँ पे बैठे हुए रिजर्व खिलाड़ी और बाद में आने वाले बैटर्स, उनके लिए ज़ाहिर है कि एक खुशगवार माहौल है। मैच उनकी दस्तरस में है, उनके कंट्रोल में है, वो ड्राइविंग सीट पर हैं। जबकि अगर लाड़काना का डगआउट हम देख सकें तो उसमें के काफ़ी हद तक मायूसी होगी फिल वक्त। 17 ओवर 4 गेंदें हो चुकी हैं। इस दौरान अगली गेंद करेंगे धानी। इस गेंद को जोरदार तरीके से पुल किया है मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान से। फील्डर गेंद के पीछे गेंद को उन्होंने फील्ड किया और 1 को 2 में बदल लिया। अच्छी चाबक दस्ती, महारत और तालमेल का मुजाहरा किया वहाज और गाजी ने। 1 को 2 में बदला। तो इस तरह अब सिर्फ 15 रन चाहिए 13 गेंदों में। क्या मैच करीब जाएगा, आखिरी ओवर में जाएगा, ये देखना होगा। जिस तरीके से बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अगर आप देखें पहला रन जो है सर पर दौड़ कर मुकम्मल किया और फिर देखते रहे। ये बड़ा ज़रूरी था कि आप गर्दन घुमा कर देखते रहे गेंद कहाँ है और कहाँ आ सकती है। तो ये जो गलत फहमी है या मिक्सअप है उससे आप बच सकते हैं। 146-5 आखिरी गेंद है शाहनवाज धानी की, अपना पूरा जोर लगा देंगे इस गेंद के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन कट कर दिया, स्लाइड किया फील्डर ने
और अब तक 2 रन मुकम्मल किया, तीसरे के लिए भाग खड़े हुए, तीसरे के लिए भाग खड़े हुए और बआसानी स्कोर को किया मुकम्मल। और इस तरह की एफर्ट पुट की थी तो यकीनी तौर पर जो हमारे टीवी अंपायर हैं वो इसे देखना चाहेंगे एक करीबी एंगल से। देखिए पहले तो दाद देना होगी बैटर्स को, 2 को 3 में बदला और अपने लिए आसानियां पैदा की। यहाँ पर गेंद को कब्जे में कर लिया है अंपायर अहमद शहाब ने, और वो टीवी अंपायर जो हैं उनके फैसले का इंतज़ार करेंगे। टीवी अंपायर में गौर से देखेंगे कि जब गेंद को रोका गया आया उस वक्त जिस्म का कोई हिस्सा बाउंड्री लाइन को छुआ था या नहीं। कोई ऐसी सूरत हाल तो बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रही। अपने आप को दूर रखा, बल्कि काफ़ी दूर रखा, फिर अंदर आए। बिल्कुल सही तरीके से गेंद को रोका। तो इस तरह 3 रन मिल चुके हैं बैटर्स गाजी को। 18 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ। कराची ब्लूज 149 5 विकेटों के नुकसान पर। आज के लिए आज एक बड़ा दिन है। बॉलिंग भी बड़ी तसल्ली बख्श रही, 3 खिलाड़ियों को आउट किया और अब बैटिंग में भी जब आए तो अपनी टीम की उम्मीदों पर पूरा खरे उतरे हैं। 12 पर 12 दरकार। तो लाड़काना को क्या करना है, अब जो कुछ करना है लगता है कराची ब्लूज ने करना है। 11 गेंदें 12 रन, मेरे ख्याल में को बहुत ही हमाकत करेंगे ये वहाज और गाजी अगर ये मैच यहाँ पर लूज़ करें। उजलत, तेज़ी, परेशानी या जल्दबाजी इनको परेशान कर सकती है। जैसे इस गेंद को जिस तरीके से खेला, और या तो विकेटें लेना होंगी दबाव डालने के लिए लाड़काना को, या दीगर सूरत में रोकना होगा, जो मुश्किल तरीन काम है। बहरहाल क्रिकेट में आप कुछ कह नहीं सकते, बज़ाहिर जो कुछ नज़र आ रहा है आपके सामने है। कराची ब्लूज के लिए आसान काम है। उस गेंद को पुल करने की कोशिश की, अपील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थ्रो होगी, ये मुश्किल काम होगा। और अंपायर क्या रेफल देंगे या नहीं? जी हाँ, लगता है कि जो टीवी अंपायर हैं, थर्ड अंपायर हैं तारिक रशीद, वो फैसला सादिर करेंगे, तसल्ली करेंगे, देखेंगे। लेकिन मुझे ये टच एंड गो वाली सूरत हाल दिखाई दे रही है। विकेट हासिल करनी होगी, यकीनन करनी होगी, और विकेट हासिल कर ली। लकी ब्रेक थ्रू हासिल हुआ है लाड़काना के बॉलर्स को। निशाना साध के मारा था, वो जानते थे इसकी कदर कीमत क्या है। जैसे ही फॉलो थ्रू से मुड़े, बॉल कलेक्ट की और बुल्सआई सीधा स्टंप्स के ऊपर, और ये आउट। वहाज रन आउट होके पवेलियन की तरफ वापस। फील्डिंग बड़ी अहम होती है, और जो फील्डर्स होते हैं वो ऐसी सूरत हाल में कमाल एक तब्दीली ला सकते हैं, और ऐसे ही हुआ। 12 गेंदें 12 रन 10 गेंदें, ये ऐसी सूरत हाल है जहां पर जो कराची ब्लूज है उनके लिए अब कुछ एंक्शस मोमेंट हैं। ये नए बैटर आए हैं, ये क्या करेंगे, और मेरे ख्याल में कुछ ऐसा मुश्किल सूरत से निकलने के लिए कोई एरी फेरी शॉट ना खेल देंगे, ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तवक्कुआत हैं कि कल रात वाला मैच एक मरतबा फिर शाहीकीन क्रिकेट को देखने को मिल सकता है। काफ़ी क्लोज है, और इसका क्रेडिट देना होगा लाड़काना को। पहले 161 रन बनाए, और उसके बाद कराची जैसी तगड़ी टीम को कहना होगा कि मुसलसल जेर दबाव रखा। दरम्यान में कुछ ऐसे लम्हात आए जहां पर ये अंदाज़ा हुआ था कि कराची ब्लूज अच्छे तरीके से ताक़ुब में है, लेकिन अब जब एक विकेट गिरी है रन आउट की सूरत में, तो अब मैच की दिलचस्पी में इजाफा हुआ है। रज़ा चांडियो आए हैं, इनको खुल के खेलना होगा, दबाव में नहीं आना होगा, मिडल करना होगा, सिंगल्स लेने होंगे, डबल्स लेने होंगे। अगर बाउंड्री लग गया तो अक्सर मैच इनके हक में जा सकता है। लेकिन बहरहाल लाड़काना के बॉलर्स जो हैं उन्हें भी थोड़ी बॉलिंग करते हुए इस बार गेंद को स्टेयर करने की कोशिश, और इसमें क्रेडिट देना होगा कीपर को भी, बॉलर को भी। तो एक डॉट बॉल, ये मुझे लग रहा है कि बिला वजह का प्रेशर है,
कोई ऐसी सूरत हाल है नहीं। और अगर हम विकेट देखें तो यहाँ पर इसको ऑन साइड पे खेला, अपील की वजह से प्रेशर में आया, लेकिन बॉलर चौकस थे, होशियार थे, मौका शनास थे, उन्होंने दे मारा गेंद को नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्टंप्स के ऊपर। तो इस तरह ये छठी विकेट हासिल हो गई है अब लाड़काना को। 9 गेंदें 12 रन। गाजी और रजा चांडियो इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं, इन पर भारी जिम्मेदारी है। क्या लाड़काना ये मैच जीत जाएगी? क्या कराची ब्लूज ये मैच जीतने में कामयाब होंगे? और एक ऑप्शन और भी है, वो सुपर ओवर की है जो कल हमने देखा था। इस बार जोरदार तरीके से गेंद को खेल दिया है ऑफ साइड पर, और गेंद एक टप्पा लगने के बाद फील्डर के पास गई। अगर सर पर दौड़ते तो ये एक गैर मामूली कैच भी हो सकता था। बहरहाल 1 रन का इजाफा हुआ है। 8 गेंदें 11 रन। हम ज्यादा जोर लगा रहे हैं, बैटर्स को ज्यादा जोर लगाना होगा और बॉलर को ज्यादा जोर लगाना होगा। 150 रन का संग मील अब हासिल कर लिया है कराची ब्लूज ने 6 विकेटों के नुकसान पर। ये वहाज रियाज जो अभी भी रन आउट हुए हैं, फिनिश तक जाना चाहते थे लेकिन रन आउट हो गए। कोई जल्दी नहीं थी, कोई जल्दबाजी की सूरत हाल दरपेश नहीं थी, रुक भी सकते थे, 1-2 और गेंदें ले सकते थे। बहुत ही अच्छा फॉलो थ्रू पे कलेक्ट किया। और ये प्रेशर होता है, ये दबाव होता है जो फील कर रहे हैं इस वक्त कराची ब्लूज के बैटर। अब रजा चांडियो हैं, देखते हैं कि क्या करेंगे रजा चांडियो। मुश्ताक है, इस गेंद को जोरदार तरीके से घुमा दिया है ऑन साइड पर। गेंद काफी देर तक हवा में रहने के बाद नीचे आती हुई और उस जगह पर गई है जहां पर दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं था। कलाई का, फुटवर्क का और मैं कहूंगा टाइमिंग का एक कमाल का मजम था। रजा चांडियो ने वो कर दिखाया जो कि इनकी टीम को चाहिए था। एक शानदार छक्का लगाया और अपनी टीम को कहना होगा अर्श पर ले गए हैं और अब वो जीत सेंस कर सकते हैं। 7 गेंदें हैं, 5 रन चाहिए और कराची ब्लूज के रजा चांडियो ने ये बेहतरीन शॉट खेली। क्या अंदाज था, क्या ग्रेस थी, क्या एलिगेंस थी, क्या टाइमिंग थी और क्या नजर थी। और उसकी तवक्को किसी ने भी नहीं की होगी। मैदान में जितने भी शायकीन हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, कमेंट्री बॉक्स एज वेल, किसी ने ऐसी तवक्को नहीं की होगी कि पहला बॉल फेस करेंगे रजा चांडियो और उसको मैक्सिमम के लिए खेल देंगे। और आखिर एक मरतबा फिर अब दबाव फील कर रही है लाड़काना। लाड़काना के बॉलर्स ने मकदूर भर कोशिश की लेकिन रजा चांडियो ने जलथल कर दिया। उन्होंने पलक झपकते ही सूरत हाल को अपने लिए आरामदेह कर लिया है। 7 गेंदें 5 रन और यहाँ पर भी अब अगर कोताही ना हुई तो कराची के लिए मैच बन चुका है। एक मतवक्को जीत के लिए मुश्ताक गेंद करेंगे ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद, इसको जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे, ऑफ साइड पर आउटरेज लगा है। 1 रन का और इजाफा। गेंद में काट मौजूद है। बदकिस्मत रहे मुश्ताक कि एक इंतहाई खूबसूरत शॉट खेला उन्होंने, प्रॉपर T20 शॉट खेला। 19 ओवर का खेल मुकम्मल हो गया है। 157 6 विकेटों के नुकसान पर 6 गेंदों में 4 रन चाहिए कराची ब्लूज को इस मैच में कामयाबी के लिए। जहाँ से जहाँ तक चले जाइए आपको सब्ज घास दिखाई देता है। दरमियान में एक चटियल वो हिस्सा है जो पिच टेबल है जिस पर ये मैच हो रहा है। घास कम है और ये कंड्यूसिव है फॉर T20 क्रिकेट। अभी जो हमने रजा चांडियो का एक छक्का देखा वो मज़र था, वो शाहिद था, वो सबूत था कि ये विकेट जो है बैटिंग के लिए साजगार है। अब अली असगर आए हैं, इस गेंद को खेलने की कोशिश और उसमें नाकामी। क्या वो करिश्मा दिखा पाएंगे अली असगर? इसके हल हैं और ये खब्बे स्पिनर हैं। ये पहली डॉट गेंद कर चुके हैं और इससे कुछ ना कुछ प्रेशर डेवलप वो होगा रजा पर। रजा छक्का लगा चुके हैं तो इस तरह गेंदें और बॉल्स के दरमियान फर्क कम होता हुआ ऑन साइड पे पेस
खींच कर गेंद कर रहे हैं इस वक्त अली असगर। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना दें बैटर को जिससे वो कोई ज़ोरदार स्ट्रोक खेल सके और उनके लिए हदफ जो है वो सहल और आसान हो जाए। हदफ ज़ाहिर करीब आता हुआ, 161 रन बनाने हैं, 4 गेंदें बाकी हैं, लेकिन अली असगर इज़ अ मैन फॉर द जॉब। वो गेंद को नीचे रख सकते हैं और ऐसी सूरत में वो स्टंप्स को हिट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक गाजी का ताल्लुक है, उनको गेंद अच्छी नज़र आ रही है, वो जानते और समझते हैं 4 गेंदें हैं, इनको कम से कम रन्स बनाने हैं। इस गेंद को अच्छे तरीके से प्लेस कर दिया है ऑन साइड पर, 1 रन बनाया है और 1 रन ही का इजाफा होगा। मजीद टारगेट करीब आता, वो एक क्लेवर थिंकिंग है कि आप करीब चले जाएं। अब 1 रन चाहिए बराबर करने के लिए, 2 रन चाहिए जीतने के लिए, 3 गेंदें इनके पास इस वक्त मौजूद हैं और सूरत हाल दिलचस्प है, सनसनीखेज है। समझाते हुए शाहनवाज दानी मुस्कुराते भी हुए कि भाई ऐसे कर लो, वो कर लो, आगे लेकर आओ, पीछे लेकर आओ, बहुत से मशवरे देने वाले हैं, लेकिन जो काम करना है वो तो अली असगर को करना है। 2 रन 3 गेंदें, दिलचस्प सूरत हाल, सनसनीखेज सूरत हाल यहाँ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जहाँ पे ABS डेवलपर नेशनल T20 क्वालिफायर 2025 का ये अहम मैच खेला जा रहा है, जिसमें अब 2 रन चाहिए 3 गेंदों में कराची ब्लूज को। असगर की ये गेंद शॉर्ट, इसको ड्राइव करने की कोशिश और अपील करते चले जा रहे हैं और अंपायर अभी को फैसला सादर नहीं किया, शायद रेफरल हो फॉर TV अंपायर। तो इस तरह अब जो थर्ड अंपायर है तारिक रशीद, वो ये देखेंगे। मुझे कोई बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उम्मीद है, क्योंकि हवा में पिछला कदम हो सकता है, ये सब कुछ आपके सामने आने वाला है और तारिक रशीद इसको देखेंगे जो कि TV अंपायर हैं, थर्ड अंपायर हैं, वो फैसला करेंगे। लेकिन एक पेश की तहनीत या मुबारकबाद ज़रूर है अली असगर के लिए कि आपने अच्छा काम किया है, वेल डन। डिसीजन पेंडिंग है, TV अंपायर देखेंगे और ये तो लीगल डील भी थी जो कि जुज़्व अव्वल की हैसियत रखती है जब आपको कोई आउट या नॉट आउट देना होता है। यहाँ पर अगर हम देखें, लीजिए जनाब, बाहर निकले और पिछला कदम अभी लगता है कि हिफाजत से था, क्विक जल्दी काम किया, ये खालिस्तन हाईली टेक्निकल काम है, मैं इसमें कोई बात कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो वो ज़ाहिर है कि कबल अज़ वक्त हो सकती है, लेकिन सनसनीखेजी का जो एलिमेंट है वो बरकरार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एक और मंजर है, यहाँ से भी आप देखिए, आया तो शैडो तो ऊपर जा रहा है, पाँव का कोई हिस्सा आउट करार दे दिया गया। तो मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, तो इस तरह रुखसत हो जाएंगे तो एक और विकेट और रजा चांडियों को जाना होगा। अली असगर ने करिश्मा कर दिखाया, एक विकेट हासिल की है और अब मैच में सूरत हाल यह है कि 2 गेंदें हैं और 2 रन हैं, तो ये 7वीं विकेट गिर चुकी है कराची ब्लूज की। ये लाजवाब बॉलिंग, रजा चांडियो आउट 8 रन बनाने के बाद वो दिल जीत लिए हैं। यहाँ पर अली असगर ने 4 रन दरकार थे सिर्फ, वहां पे बॉलिंग के लिए आए, मुतहर्रिक दिखाई दिए कि विकेट मुझे चाहिए, मुझे विकेट दिलवानी है। पहला डॉट बॉल, फिर सिंगल और फाइनली ब्रेक थ्रू दिलवा दी अपनी टीम को। बैलेंस बरकरार ना रख पाए, जो पिछला कदम था वो काफी आगे ड्रैग कर दिया, ड्रैग पीछे करने की जरूरत थी और विकेट कीपर की बहुत ही बेहतरीन चाबुक दस्ती, पलक झपकने से भी तेज उन्होंने बेल्स रिमूव किए और रजा चांडियो को कहा कि आप हो गए हैं आउट। थर्ड अंपायर के लिए भी खासा मुश्किल डिसीजन था, लेकिन फाइनली मेड कर लिया उन्होंने डिसीजन। अब देखते हैं मास खुर्रम, 2 रन बनाने हैं कराची ब्लूज की फतह के लिए। दूसरी तरफ अली असगर जो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, उनका मोराल इस वक्त हाई होगा। माज के लिए काम और मंजिल करीब भी है, दूर भी है। 2 गेंदें 2 रन तो आया, ये एक सनसनीखेज इख्तिताम होगा। अली असगर ने एक बाकमाल बॉलिंग की है, लो ट्रैजेक्टरी से और गुड लेंथ से आगे गेंदें की हैं और ये परेशान कुन सूरत हाल है फॉर कराची ब्लूज सपोर्टर। 12 लगी गेंद करेंगे, राउंड द विकेट, इस गेंद को कट किया, ड्राइव किया ऑफ साइड पर, 1 रन बनाया है। तो इस तरह अब द स्कोर्स आर लेवल। क्या आज फिर यहाँ पर एक मार्कातुल आरा इख्तिताम होने वाला है? क्या हम जाएंगे सुपर ओवर में? दैट हैज टू बी सीन। लेकिन अभी भी जाहिर है कि कराची ब्लूज ने अपने लिए एक हद तक तो मैच को महफूज कर लिया है, मैच बराबर पर खत्म होगा, लेकिन क्या वो उस जहमत से, उस मरले से बचना चाहेंगे जो कि सुपर ओवर का होता है?
ये $1 मिलियन क्वेश्चन और इसका फैसला जो है इस आखिरी गेंद पर हो जाएगा। गाजी सामना करेंगे, अली असगर नैगिंग लाइन और लेंथ से गेंदें कर रहे हैं। फील्ड में तब्दीली की गई है और मेरे ख्याल में जो मशवरा उनको शाहनवाज धानी ने दिया था वो उस पर कारबंद रहे और उसी तरह गेंदें की जिस तरीके से आखिरी ओवर में आखिरी गेंदों में की जाती हैं। आप देख सकते हैं कि फील्डर जो हैं वो कन्वर्ज हो चुके हैं बैटर के दोनों अतराफ। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट कवर, पॉइंट और मिड ऑफ। अली असगर गेंद करेंगे, राउंड द विकेट है, इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर। तो इस तरह कराची ब्लूज ने इस चौके के साथ कामयाबी हासिल कर ली है, मैच जीत लिया है। बड़ा सनसनीखेज इख्तिताम हुआ। दाद देना होगी लाड़काना को, दाद देना होगी अली असगर को जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की, लेकिन इन दी एंड कहना होगा कि कामयाबी मुकद्दर हो गई कराची ब्लूज की। तो इस तरह ये मैच उन्होंने बआसानी 3 विकेटों से जीत लिया। इन दी एंड कहना होगा, लेकिन वेल डन लाड़काना एंड वेरी वेल डन कराची ब्लूज। तो ये आखिरी वो एक धचका था, एक आखिरी शॉट था, इत्मीनान से मीट ऑफ द बैट गेंद बैट के दरमियानी हिस्से से लगती हुई लॉन्ग ऑफ की जानिब गई जहां पर दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं था। तो एक बहुत ही अच्छा सनसनीखेज और बाकतुलरा मैच खत्म हुआ यहाँ पर, जिसमें कामयाबी हासिल की है कराची ब्लूज ने 3 विकेटों से लाड़काना रीजन पर। अपने साहब को आखिर तक काबू में रखा गाजी खोरी ने और ये वो मर्दे मैदान हैं इस वक्त आप देख सकते हैं। स्किपर और अपनी टीम की उम्मीदों पर पूरा आज खरे उतरे हैं। आखिरी बॉल पर बड़ा जिगरा चाहिए होता है इस तरह का शॉट खेलने के लिए, लेकिन बॉल के पिच तक पहुंचे, अपनी निगाहें गेंद की तरफ रखी और चौके के लिए खेल दिया। और इस वक्त ये शेक हैंड जारी है दोनों टीमों का। कराची की टीम की दूसरी ये मुसलसल कामयाबी। स्पोर्ट्समैनशिप इस वक्त देखते हुए आप, और काफ़ी दोस्ती भी दिखाई दे रही है दोनों टीमों के माबैन। शाहनवाज धानी जिस तरह एंजॉय कर रहे थे गेम को, और एक ट्रू स्पोर्ट्समैन है शाहनवाज धानी, एंजॉय करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस 200% देते हैं। फाइनली कराची दूसरा मुकाबला अपने नाम करती हुई। जबरदस्त हाईलाइट्स होगी इस मैच की कार्रवाई से मुताल्लिक। ये कराची ब्लूज की बैटिंग है, गेंद बल्ले पर लगती रही, बल्ले रन निकलते रहे, गाहे गाहे बच्चे भी गिरती रही। कामयाबी यहाँ समेटी इस दौरान लाड़काना ने, लेकिन चौके और छक्के भी लगते रहे। बीच में एंशियस मोमेंट भी आए और आपने देखा कि बॉलर बैक ड्राइव, बच्चे ग्रीन, विकेट कीपर ने आज अच्छी कारकर्दगी दिखाई, थ्रो आउट। और ये एक लैंडमार्क है 50 रन से मुताल्लिक। इस बार आप देख सकते हैं कि अच्छी फील्डिंग भी हुई, ऑन साइड ऑफ साइड पे फ्लिक करने की कोशिश, अपीलें भी होती रही, विकेटें भी गिरते रही, रन भी बनते रहे और मैच जारी रहा। यहाँ पर हमने आज बड़ा शानदार इख्तिताम देख रहा है। आखिरी गेंद पर कराची ब्लूज ने कामयाबी हासिल की इस तरीके से। आप ये बैटिंग कार्ड देख रहे हैं जहाँ से 5 हैसन वाज द मैन इन चार्ज विद 65 रन्स, 38 रन। तहा ने बनाए 19 रन के लिए केडी गाजी ने, वहाज जो बदकिस्मती से 16 रन बनाए, लेकिन फिर नॉट आउट रहे मास 1 रन के साथ। और अच्छी स्कोरिंग शॉट्स के लिए गाजी ने 19 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। जो बॉलिंग एनालिसिस अब आप देख सकते हैं, असगर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, 3 for 29 इन 3 overs। 4 ओवर की जायद ने कोई विकेट हासिल नहीं की, 36 रन की, और एक विकेट हासिल की गुलाम, सकलैन और मुश्ताक ने। तो अच्छा अमेलगमिज्म था। मैं कहूँगा दोनों टीमों ने बराबरी की बुनियाद पर अच्छा खेल पेश किया, लेकिन लेडी लक जो थी वो इन दी एंड कहना होगा कि कराची ब्लूज के साथ। ये समरी है, मैच समरी है, जिसमें लाड़काना 160 पे 7 और कराची ब्लूज 164 7 विकेटों के नुकसान पर। और इस तरह कराची ब्लूज ने 3 विकेटों से इस मैच में, इस क्रूशल मैच में कामयाबी हासिल कर ली है। यहाँ पर हम लेके ब्रेक और फिर कुछ देर के बाद प्रेजेंटेशन के लिए आपको नीचे लिए चलेंगे।
Yes, another fabulous game of cricket we have witnessed here at ABS Developers National T20 Qualifiers. Another excellent performance from Karachi Blues as they become the only team to chase down total here at this Gaddafi Stadium. Welcome to the post-match presentation. In the presentation party, I have the pleasure of having Mr. Ali Hussain Bukhari, who is the manager GSL. First of all, I'd like to talk to the player of the match for his fantastic performance. 3 for 14 and 16 runs, Wahaj Riaz for Karachi Blues. I would request Mr. Ali Hussain to please hand him over the cash award of PKR 25,000 to Wahaj Riaz. Brilliant spell of bowling. 3 for 14 and 16 runs for his team. कहाँ जा रहे हैं? आज तो परफॉर्मेंस की बात करना तो बनती है. कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग मैच जीते हैं और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. क्या प्लान लेके जाते हैं जब आपने मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करनी होती है? क्या थॉट प्रोसेस होता है आपके उसके पीछे? सिंपल प्लान होता है जो कोच और कप्तान का प्लान होता है. कोशिश होती है कि उसी पे बॉल करूँ और अल्लाह पाक ने उस पर रिजल्ट दिया है. आपकी ऑलराउंड एबिलिटीज़ का आज हमें पता लगा. बॉलिंग तो आप कर ही रहे थे लेकिन रन्स भी हैंडी हुए टीम के लिए. जी यही था. रन्स थोड़े बहुत बनाए गए लेकिन कोशिश यही थी कि फिनिश करके आऊँ. अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर सका और हम मैच जीते. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. पाकिस्तान जूनियर लीग की यादें भी होंगी आपके इस ग्राउंड में? बिल्कुल पाकिस्तान जूनियर की लीग की यादें हैं. बिल्कुल. चलिए, वेरी वेल डन. Congratulations and all the best for the remaining games. Thank you. Right, that was the player of the match, Wahaj Riaz, for his brilliant performance for Karachi Blues. Now time to talk to the losing captain, Zahid Mahmood for Larkana. Zahid, hard luck. करीब आ रहे हैं मैच जीतने के लेकिन वो फिनिशिंग टचेस नहीं दे पा रहे हैं. जी बिल्कुल. इसमें मैं कहूँगा कि थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी है लड़कों में, लेकिन अच्छी फाइट की और अच्छा मैच हुआ. इंशाल्लाह डे बाय डे इम्प्रूव ही है. अच्छा मैच खेल रहे थे. कहाँ आपको लगा कि मैच हाथ से निकला आपके? क्योंकि रन्स तो अच्छे खासे हो गए थे. मैं कहूँगा थोड़ा सा एक दो बाउंड्री जब मेरा आखिरी ओवर था वहाँ पे आई और उसके बाद लास्ट में जो मुश्ताक के ओवर में एक छक्का आया तो वहाँ पे मुझे लगा थोड़ा टर्न हो गया. मतलब वहाँ चला गया मैच. लेकिन ओवरऑल इस यंग साइड से आप हमेशा जिक्र करते हैं, सेटिस्फाइड है एज अ कैप्टन? जी काफ़ी अच्छी लास्ट मैच से अगर देखा जाए तो अच्छा उन्होंने आज इम्प्रूव किया है. आज अच्छी फाइटिंग मैच हुआ है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डे बाय डे अच्छी क्रिकेट खेलें. All the best for the remaining games. Zahid Mahmood, the losing captain Zahid Mahmood. Now time to talk to the winning captain, Karachi Blues, Mr. Ghazi Ghauri. Well done, congratulations. चेज आप कर रहे हैं लेकिन आखिरी बॉल तक ले जाते हैं, आखिरी ओवर तक ले जा रहे हैं. जी असल में थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम बॉलिंग कर रहे हैं ना उस तरीके से हम फिनिश नहीं कर पा रहे बॉलिंग. हम 10 में 60, 10 में 65 पे शुरू करते हैं, फिर आखिरी 10 ओवर में हम लोग 80-90 बनवा देते हैं. तो जब तक हम ये चीज़ें बेहतर नहीं करेंगे तो मुश्किल रहेगा हमारे. आज ओवरऑल इंटेंट फील्डिंग में भी आज फिटनेस लेवल भी बेहतर नजर आए. जो आपने बातें की थी उसका असर नजर आया फील्ड में आज? जी अभी भी लेकिन बहुत गुंजाइश है फील्डिंग में भी और इंटेंसिटी में भी और हाई हो सकती है क्योंकि सारे यंग लड़के हैं और हमें बेहतर करना चाहिए फील्डिंग में भी क्योंकि हम फील्डिंग से जो फ़र्क डाल सकते हैं वो बैटिंग में बहुत काम आता है. लेकिन अच्छा रहा कि एहसान अली फॉर्म में आ गए. उन्होंने अच्छी इनिंग खेली टॉप ऑफ द ऑर्डर. बिल्कुल एहसान भाई ने बहुत अच्छा खेला और हम उनके ऊपर रिलाई भी करते हैं क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जब वो खेलते हैं तो फिर वो मैच एक साइड पे कर देते हैं. तो उनका फॉर्म में आना भी बहुत ज़रूरी था. और आसिफ चांडियो जिस तरह नीचे से हमारे लिए फिनिश करता है मैच आके वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है. आगे इंपॉर्टेंट गेम आने वाली है इस्लामाबाद और आप में से काफ़ी मुश्किलात होंगी जिसने आगे जाना होगा. तो प्रिपेयर्ड हैं उस गेम के लिए भी? बिल्कुल ऐसा ही है. अभी 2-3 दिन का रेस्ट है उसमें और तैयारी करेंगे मेंटली भी और स्किल वर्क भी करेंगे. लेकिन जो टीम गलतियां कम करेगी वही आगे जाएगी. Thank you very much and all the best for the remaining games. Ghazi Ghauri, the captain of Karachi Blues. That is all we have at the moment. For now, we will go back for the next game. It's Azad Jammu Kashmir taking on Islamabad and we'll come back with the toss. सभी फील्डर के सर के ऊपर से स्ट्रोक खेल दिया मल्हार ने. This is the second time this very bowler Fahad has fallen. इस बार उस जगह पर गई है जहां पर फील्डर मौजूद नहीं थे. Aha, that's nice. That's brilliant.
Dasson down on one knee and hits it way past the boundary rope.